अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो फर्स्ट फेज है मीटिंग का वो रिकॉर्डेड होगा आज। हम लोग ना उर्दू में सेशंस अलग करेंगे, इंग्लिश में सेशंस अलग करेंगे, so that सबको आसानी हो. We will do sessions in Urdu and English separately so that it's easier for everyone to understand and comprehend, because sometimes, because of various language barriers, it becomes difficult for people to understand and comprehend and be able to absorb the content, what is being provided to them, right? Sometimes एक इंसान के साथ कभी अक्सर ऐसा होता है कि अगर उसको चीजें समझ नहीं आए तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. So this session is in Urdu. ये सेशन उर्दू में है. It will be recorded in English and will be kept online at a separate time. You will be able to see this in the portal, recorded in English, and you can follow it then. Okay. Yusuf, the first half of the session needs to be recorded and dubbed into English and other languages. When the Q&A session starts, please don't record it and don't put it online. That's open session for Q&A. Okay. Today's session, we are resuming our classes after some time. There are a couple of updates. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So today's session, we have a lot to cover. हमें बहुत सारी चीजें cover करनी. This session is in Urdu. ये उर्दू में session है. It will be recorded in English and it will be kept on the portal. इसको English में record करके रख देंगे वहाँ पर, and then you can follow it, right? Today's date is 27th of May. On 26th of May, we got a news. हमें 26 मई को एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ मिली, and that was ISACA accreditation and validation. Now this is huge. ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. क्यों बड़ी चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, because that will give you precedence in terms of अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, because इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, you will be able to understand the value of these things and what we're going to do and how we're going to do, right? So let me open this quickly to give you a deep insight on all the things. Just give me 1 minute. So there are various benefits. इसके बहुत सारे फायदे हैं आईसाका की एक्रेडिटेशन के और वैलिडेशन के. ये जो हमारी क्लास है ये लेवल 3 की क्लास है. लेवल 3 की जो क्लासेस हैं ये तमाम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू द डीप इनसाइट्स. ये आपको डीप इनसाइट्स देती हैं कि आपने लेवल 4 का एग्जाम कैसे पास करना है, उसमें आपने इंटरव्यू को कैसे पास करना है, लेवल 5 में क्या करना है, लेवल 6 में क्या करना है, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन लेवल 3, राइट? यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वुड लाइक टू कवर हियर जो आपको कवर करनी है. वो है बेसिकली आईसाका की एक पार्टनर जो है ना, उसका फ़ायदा क्या है. आईसाका दुनिया का एक बहुत बड़ी बॉडी है, एंड इफ आई हैव टू शो यू समथिंग, आईसाका इज़ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. आईसाका दुनिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लेवल्स के ऊपर काम कर रही है, राइट? Who is ISACA and what are the advantages of their certifications? So मैंने यहाँ क्या किया, it's a very simple thing. मैंने Google Bard पे एक क्वेश्चन टाइप किया कि ISACA कौन है और उसका एडवांटेज क्या है ना, ठीक है. Now keep in mind कि जो Google है, जो Bard है, वो बेसिकली गूगल बार्ड बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी जो है इसका जो नॉलेज बेस है उसका कट ऑफ होता है. देयर इज अ कट ऑफ. उसका नॉलेज बेस कब तक उसको सिखाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है ना. सो इट गोज, यू हैव टू लेट द लर्निंग मॉडल learn the data and then create a cut off and then come back and then ask the questions. ये large scale जो learning models हैं LLMs, इसमें यही होता है. However, जो गूगल बार्ड है, it's very different. I can't use it from मैं कनाडा से यूज नहीं कर सकता. I can't use it from Canada because of the privacy concerns. उसके लिए मैं यूज नहीं कर सकता. लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि उसका वो क्या है। तो मैंने गूगल बार से चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे इसका क्या फायदा है ना, ठीक है, मुझे इसका क्या फायदा है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। सो देखिए, मैंने उससे पूछा सवाल, और सवाल पूछा कि भाई मुझे ना, हु इज आइसाका, आइसाका कौन है, यूएसए, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ देयर सर्टिफिकेशन। तो उसने कहा आइसाका विच स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर आईटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अब ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं है, इनके पास और बहुत सारी चीजें हैं। अब ये आईओटी में भी काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में भी काम कर रहे हैं, डेटा साइंस में भी काम कर रहे हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कंपनी में चले जाएं, इनका नाम आपको सब जगह मिलेगा, नजर आएगा, इनके बंदे आपको नजर आएंगे। अब आपके पास बिकॉज ऑफ दीज, मतलब कि अगर आपके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन है डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, तो आप इसमें बैठकर काम कर सकते हैं, और आपको इसके सारे बेनिफिट्स को आप ना 1 साल के लिए तमाम बेनिफिट्स को आप अक्रू कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। 1 साल की मेंबरशिप आपको फ्री मिलती है जो कि $150 की है। उसके बाद जो भी होता है, उसके एग्जामिनेशन फीस आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिलती हैं, राइट। तो असाका जो है वो वेल नोन है फॉर इट्स सर्टिफिकेशन, ग्लोबल रिकग्निशन है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ये लोग, कैरियर एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है, नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन, हमारी तमाम डिप्लोमा प्रोग्राम्स के, जो आरक्यूएफ के हैं और जो बड़े हैं डिप्लोमा एंड एडवांसमेंट ट्रैक्स के, अब तमाम के कैरियर एडवांसमेंट और वैट को छोड़कर तमाम के ऊपर आप कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन क्रेडिट्स भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, दिस इज ह्यूज। सो आपको उनकी जो तमाम क्वालिफिकेशंस है उसके ऊपर मिलता है। तो ये ग्लोबली एक रिकग्नाइज वेंडर है, और ये आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो गवर्नेंस हो, प्राइवेसी हो, इनकी तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इनके पास जो दुनिया में इस वक्त, अगर हम सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, तो 6,65,000 न्यू ओपनिंग हर टाइम पर हो रही हैं, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ यूएसए के अंदर अगर देखा जाए तो 7,10,000 के करीब जॉब्स खाली हैं। मगर इसके अलावा डेटा साइंस है, इसके अलावा आपके पास ना ऑडिट है, गवर्नेंस है, प्राइवेसी है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तमाम जगहों पे मिलियंस ऑफ जॉब्स खाली हैं जो आपको मिल सकता है। इसमें इनकी तमाम क्वालिफिकेशंस हमने इनबेड कर, अब हमने शुरू कर दी हैं, जिसमें ये सारी फंडामेंटल्स लेवल्स की तो हैं, मगर हमने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की क्वालिफिकेशंस को एम्बेड किया, जिसमें सीसा है, सी गैट है, सी जी ई आई टी, सीसा, सी रिस्क, सी आर आई एस सी, सी डी पी एस सी, सिसम, ठीक है ना, सी एस एक्स, ठीक है ना। ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं हमने उसमें डाल दी हैं। दिस इज ह्यूज। इसमें आईओटी भी है, ब्लॉकचेन भी है, क्लाउड भी है, जैसे ये सीसीए के है, बहुत सारी चीज़ें। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस जिसमें मैंने आपको बताया, और ये सर्टिफिकेशन अब जो आपको मिलेगी, तो उसमें इसका इनकी तरफ से भी वो होगा। इनके जो मेंबर्स हैं दुनिया भर में, वो 2 लाख के करीब हैं, 188 कंट्रीज में इनके मेंबर्स हैं, 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी, 225 चैप्टर्स हैं, और इसके जो एंगेज प्रोफेशनल्स हैं वो तकरीबन 5,50,000 के करीब हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ी फर्म आप चले जाएं, कोई भी बड़ी फर्म हो, आपको वहां पर इनके लोग मिलेंगे, राइट, यू विल फाइंड देम। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो हम लोग अपने बच्चों को प्लेस करेंगे, वो उनको प्लेस करेंगे जो एग्जाम पास करके आएगा हमारा एजुकॉल का ना। बाकी सब पढ़कर इंटर्नशिप करके जा सकता है, वो दे कैन अप्लाई फॉर इट ऑन बाय देमसेल्व्स। मगर उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, वी आर डूइंग अनदर इवेंट वेयर वी विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग एंड वी विल मेंशन ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल, ओके। So today's session is all about, this was the big news. You will know more, inshallah. Today's session is all about basically the key requirements of basically the PCI DSS standard. So the PCI DSS standard है, उसकी Q requirements के ऊपर हम बात करेंगे, and that is requirement 12. So we're going to cover requirement 12 of the PCI DSS standard. Now, there are multiple requirements. We will go through them later. You know, we have gone through most of these requirements, but today it is all about PCI DSS की जो requirement 12 है उसके ऊपर बात करेंगे। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, no matter where you are, no matter what you do, ठीक है, you have to follow certain protocols, ठीक है, you have to follow certain protocols. आप चाहें बेसिकली नेटवर्क बनाएं,
आप डेवऑप्स में काम करें, आप सिसऑप्स में काम करें, आप एआई में काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ब्लॉकचेन में काम करें, आप बिग डेटा में काम करें, डेटा साइंस में काम करें, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स यू नीड टू कंप्लाई विद। किसी ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, क्या हो गया इसको? Let me record it again. There are certain standards you have to follow. Certain standards हैं जो आपको follow करने ही करने हैं. अगर आप वो नहीं करेंगे, it will be very difficult for you to do anything, right? One of that standard is basically PCI DSS. So we will cover the last requirement of PCI DSS, and then we will compile everything. और इसके बाद हम compile करने के बाद इसका जब internship हमारा होगा, तो we are starting the internship program with PCI DSS. हम जब internship program start कर रहे हैं, उसमें PCI DSS से ही सबसे पहले काम होगा. आप दुनिया में कहीं भी चली जाएं, कहीं पर भी काम कर रहे हो, that is the key requirement you have to follow. Okay, so let's go back and review quickly the key standard that we all have to follow. और उसकी जो requirement 12 है, what is requirement 12, right? What do we have to comply with? So we will go through all of that. Let me share the screen quickly and make sure that you can see it. So this is the key standard. इसमें जो last change हुआ था वो 2022 मार्च में हुआ था, 4.0, which is the standard. मैं standard में 2005 से काम कर रहा हूँ. Prior to that, this had a different name, right? इसका different name था. PCI DSS का जो नाम है, जो है वो 2008 से बनना शुरू हुआ था. उससे पहले भी PCI DSS था, लेकिन it has a different name. और ये तमाम कार्ड ब्रांड्स के हिसाब से वो लोग चला रहे थे इसको, राइट? जब इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना शुरू किया है, तो इट वाज वे डिफरेंट. यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें हैं. दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टुडे वी गोना टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट नंबर 12. रिक्वायरमेंट नंबर 12 जो है, दिस ऑल टॉक्स अबाउट बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट? इट टॉक्स अबाउट आपकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इट कवर्स, राइट? अगर आप देखें इसको, this is the standard. Support information security with organization policies and programs. Now, as I said, if it's big data, data science, blockchain, artificial intelligence, if it's cyber defense, offensive security, digital forensics, IoT, any emerging technology, अगर उसके अंदर से या उसके पास से, from within the technology, or if that technology is transmitting, processing or storing card data, then PCI DSS is applicable on it, right? और उसके लिए फिर आपको requirement 12 policies बनानी होती हैं. So these policies are very wide. It has a very wide spectrum. इनका बहुत ज़्यादा wide spectrum है, right? So इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको properly design करें, develop करें, communicate करें. These are very very important, right? So requirement 1 to 10 इसके requirements हैं. ये key requirements हैं. हम इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर, because अब internship के अंदर हम इसको बहुत detail dive करेंगे. Internship is open for everyone. Whoever has done, जो पुराने legacy students हैं वो, जो पुराने students थे और जो new students हैं, internship will be open for everyone. They can come, they can join, they can do the classes, they can attend the classes, they can do all of those things. But there are two tiers, and I will tell you the tiers later on, inshallah. But मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि what do you have to follow. So you have to go through all of these requirements. So requirement 12 is the one, a comprehensive, which has 10 parts, requirement 12, a comprehensive information security policy that governs and provides direction for protection of the entity's information assets in known and current, basically. ठीक है? तो अगर आप उसको देखें, and if you look at it, each and every policy की defined approach दी हुई है. Approach requirement क्या है, testing procedure क्या है, और purpose क्या है. कोई भी policy अगर आप बनाते हैं, उसको establish करना है, उसको publish करना है, उसको maintain करना है, उसको disseminate करना है, यानी कि फैलाना है पूरी organization. You have to spread the information to all relevant personnel as well as the relevant vendors and business partners. अगर आपका network, जो भी आपने, whatever network is, अगर वो connected है cloud provider के साथ, तो you have to communicate your policy to the cloud provider. अगर आपने किसी से, if it is connected to the cardholder data network, right? If it is connected,
whoever that vendor is, if it's a cloud provider, आपको उसको inform करना है अपनी policies के बारे में. If it's a software developer or vendor, you have to do that. आपको करना पड़ेगा. अगर उसमें कोई कॉल सेंटर है जो आपके कार्ड डेटास को ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, you have to inform them about the policies and procedures. इंटरनल स्टाफ है जो हाथ लगा रहा है सिस्टम्स में, इसको इंटरेक्ट कर रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म देम. एक्सटर्नल स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आके काम करते हैं टेम्पररी, अगर वो सिस्टम्स को हाथ लगा रहे हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म देम. आप डेवऑप्स की पाइपलाइंस बना रहे हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, सब कुछ हो रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म द डेवऑप्स टीम. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम काम कर रही है जो सारे डेटा को एनालाइज कर रही है, सब कुछ कर रही है, डिसीजंस ले रही है, ऑटोमेशन पे काम कर रही है, आपने उसको इन्फॉर्म करना है. आपने ब्लॉकचेन की अगर कोई टेक्नोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उसके ऊपर काम कर रही है, पीसीआई डीएसएस के डेटा को सिक्योर कर रही है, पेमेंट कार्ड डेटा पे कर रही है, जहां पर पीसीआई डीएसएस का डेटा आता है, यू हैव टू इन्फॉर्म देम. इट डजंट मैटर कि कौन, अगर इफ एनी ऑफ दीज पार्टीज और एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज और एनी ऑफ दीज एप्लीकेशंस और एनी ऑफ दीज पीपल, अगर पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी, तीन एलिमेंट्स अगर वो इन्वॉल्व हैं, पीपल इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, प्रोसेसेस इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, टेक्नोलॉजी इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ठीक है ना, ये इट सम्स अप एवरीथिंग, इट सम्स अप एवरीथिंग. अगर ये कर रहे हैं, इन सब को आपने ये पॉलिसी बना के कम्युनिकेट करनी है, ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेंबर, बिकॉज जब आप पीसीआई डीएसएस में काम शुरू करते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट, you don't start from requirement 1, you go back to requirement 12. So turn the standard upside down, right? So जब आप काम करते हैं PCI DSS में, ठीक है, you go back to where you look at the standard. Where do you look the standard? So if I go all the way up, right? बिल्कुल ऊपर चले जाऊं, बिल्कुल टॉप पे, right? This is the standard. There are 10 requirements, right? 10 requirements, 12 requirements, right? 12 requirements. You don't start here. You start at requirement 12. Because these policies needs to cover all the other 11 requirements. So, ये जो requirement 12 है ना, this is very, very broad. So, यहाँ से आप शुरू करेंगे और आप नेटवर्क डायग्राम मंगाएंगे, आप नेटवर्क कंट्रोल्स मांगेंगे, आप उससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्रोल्स मांगेंगे, क्लाउड टीम से बात करेंगे, डेवऑप्स टीम से बात करेंगे. You define your universe as per the network diagrams and the cardholder data environment, but everything is encapsulated via the policies and procedures. This is the most important thing. Okay? अगर आपको ये चीज समझ आ जाए, then you can do all of those things. So the requirement 12 है. Requirement 12 is the main requirement, right? So let me show you, because know this, everything else will become very, very easy for you. अगर आपको ये चीज समझ आ जाए, बाकी तमाम चीजें बहुत आसान. अगर ये चीज समझ नहीं आई, इफ यू कांट अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग विल बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज तमाम चीजें जो है ना वो टेक्नोलॉजी की पीसेस हैं, बट जो असल चीज है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, इट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको इसको समझ के करना जरूरी है. सो दिस इज रिक्वायरमेंट, एज आई सेड, दिस इज रिक्वायरमेंट 12, राइट? Requirement 12, which is, we call it P&P, policies and procedures. So as I said, इसके तीन pillars होते हैं. There are 3 pillars, right? So these are the 3 pillars. One is people, processes, and technology. ठीक है? People कौन से हैं? Internal, external, vendors, contractors, everyone come here, right? सब आ जाते हैं. Processes, internal processes, external processes, everything. ठीक है ना? Technology, internal technology, external technology, आपने किसी से सिस्टम लिया हुआ है, cloud services लिए हैं, everything. This is the main foundation. So requirement 12 is the main foundation, because everything stands on requirement 12. जितनी भी चीजें हैं, it stands on requirement 12, which is policies and procedures, right? Policies को आप जब बनाते हैं तो आपकी policies ऐसी होनी चाहिए, as I said, policies ऐसी होनी चाहिए कि वो establish करें, आपको document करते हैं सब कुछ, ठीक है ना? उसके सारे templates हैं, we have given you all the templates and everything, and हम आपको walk through करवाएंगे in the internship program. Internship program में आप पूरे network को बनाएंगे, उसको document करेंगे, सब काम करेंगे उसके ऊपर.
That is your interview. If you go for an interview, जैसे यहाँ there was a student who asked me, I'm studying 8 hours a day. मैं 8 घंटे रोजाना पढ़ता every day. और मैं जो ना बस मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो मैंने DevOps से सॉफ्ट मिला के ले लिया. बहुत अच्छी बात है. That's very good. Essentially, that's very good. But what is DevOps and SysOps? And why are you doing this thing? So so try to understand this. Because if you can understand this, everything else become easier for you. Just like policies and procedures are the key aspects, for any career that you want to make, there are two foundations. Right? Which are very important. The first foundation, two foundations. पहली foundation आपकी है SysOps. ठीक है? दूसरी है DevOps. अगर आप एक पढ़ रहे हैं, if you're studying one or the other or both, ठीक है ना, you need these skills. क्योंकि ये जो skills हैं, ये तमाम कहां पर, you don't utilize these skills in isolation में काम नहीं करते. आप काम करते हैं इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री के अंदर सारा जो काम आता है, this is the industry. इंडस्ट्री क्या है? What is the industry? इंडस्ट्री है वो स्टैंडर्ड्स जिसके हिसाब से आपको सब चीजों को कंप्लाई करना है, जैसे PCI DSS, ठीक है ना, ISO 27001, ठीक है ना. तीसरे पे आता है ISO 22301. फोर्थ पे आता है CIS टॉप 18, राइट. इसके अलावा द लिस्ट गोज ऑन. फिफ्थ पे आता है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, राइट. IT गवर्नेंस आता है, ठीक है. IT गवर्नेंस एक अलग चीज है, राइट. रिस्क मैनेजमेंट आता है. तमाम चीजें जो हमारी आती हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स. लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, व्हाट इज दिस? दिस इज RQF लेवल 4 क्वालिफिकेशन जो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है. अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, दिस इज RQF लेवल 4. इन दोनों को मिला देंगे, इट बिकम्स RQF लेवल 5. द लेवल चेंजेस और इसके एग्जाम्स भी बड़े हो जाते हैं, बट दिस इज ऑल RQF रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 3, विच इज डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी. इसके अंदर यहाँ पर स्केडा आ जाता है, इसके अंदर यहाँ पर IoT आ जाता है, इसके अंदर यहाँ पर ब्लॉकचेन आ जाता है, ठीक है. जो ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास IEC जो है ना 62443 आ जाता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब आ जाती हैं. सो इफ यू डोंट नो दिस, अगर तुम्हें ये नहीं आता, अगर तुम्हें इस पे काम नहीं आता, तो यू कांट वर्क हियर, यू कांट. बट इफ यू नो दिस, अगर तुम्हें ये आता है, ठीक है, अगर तुम्हें ये आता है और ये नहीं आता, you can't work. So you need to learn both. It has to be a balanced approach, right? Either you can learn this first, right? Or you can learn this, or you can learn this. The proper methodology is कि आप इसको सबको लेके चलें, ठीक है ना. You study 2 hours a day here, 2 hours a day here, 2 hours a day here. If you can spare 6 hours. If you're not, then 1 hour a day here, 1 hour a day here, and then 1 hour a day here. Right? It all depends how much time you can. The more time you put in, because some people have more time, then you can go in, right? So this is all requirement 12, right? So if I have to go in, and if I have to say, this is all requirement, this is all of this, this is all requirement 12. Requirement 12, we called it Diploma in Cloud Cybersecurity, but essentially it's much, much bigger, right? It's much, much bigger. Anyway, so requirement 12 में you have to develop the policies, you have to make sure के policies compliant हों. We will go through all of them in our internship program, because जब वो policy बनेगी, हम उसको बनाएंगे भी. We will build up the network, we will create the network in front of you on the cloud, and we will deploy the application deploy करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उसकी policies and procedures भी design करेंगे. All of these things will be done. और ये सब आप काम करेंगे, so that when you go for the interview, the interview doesn't only cover this. The interview जो होता है ना, it not only covers this. If you really want to ace the interview, then you need to learn this, all of this.
then this interview becomes very easy for you. This becomes way easier. Then you can say, okay, now it's easier for me. I understand. And imagine the industry. This is the industry. So this is the industry, right? जो key उसके pillars हैं, जो key उसके जो tentacles निकलते हैं. So the first tentacle is DevOps or SysOps, whatever. ठीक है? The second tentacle is basically SysOps, right? जिसमें आपको architecture सीखते हैं. So here you learn all the development operations, right? Here you learn all the architecture of the cloud and everything, right? Here, the next one is AI. This is known as the artificial intelligence, the AI operations, because you have to automate this and this, automate all of this through basically AI के जरिए करते हैं, right? इसका जो fourth tentacle है वो है big data, right? Big data एक अलग है इसका, right? इसका जो fifth tentacle है वो है आपका, and this can be other thing, ठीक है? और जो भी whatever you want to do, this can be offensive security, this can be offensive if you really want to go into that. All of this collectively is known as smart ops, right? In the middle, it's all industry. What is industry? Essentially, जो diploma in cloud cybersecurity जिसकी आप classes ले रहे हैं, this is diploma in cloud cybersecurity. It's a very deceiving name because it not only covers cloud, it covers everything, right? You can throw in data science. The data science is already here, and data science, right? And DS, right? AI already has ML, DL, all of those things are already there, right? Then you can add later on blockchain. You can also add software development. Then you can also add QA ops, right? QA operations. Then you can also add IoT. You can also add basically SCADA. See, so ये जो common variable है, it's this. This is the common variable. That is where you have to focus. यहाँ तुम्हें focus करना है, ठीक है? This is, अगर तुम्हें ये आता है, जैसे for example, this is, imagine this, PCI DSS, right? If you know PCI DSS, ठीक है? Then you can become DevOps. आप DevOps में अच्छा काम कर सकते हैं. आप SysOps में अच्छा काम कर सकते हैं. Because organization में DevOps SysOps आने से पहले PCI DSS पहले से ही था. It was already there. So no PCI DSS. और PCI DSS में सारा काम कहाँ से शुरू होता है? Policies and procedures. Everything starts from policies and procedures. So that's why policies and procedures की बहुत अहमियत है. If you know this, you can effectively communicate with the organization. तुम senior management से बात करने के काबिल हो जाओगे. तुम बोलोगे yes, I understand the requirement. Because जब business के पास आप जाते हैं, one of the key things you have to talk to them is the business requirements comes first. Everything is secondary. What is the business requirements? Customer satisfaction, customer delight, sales retention and expansion. ठीक है ना? We have to keep on increasing the customer base. So you design these policies and procedures in line with the business customer requirements. Okay? Then you can design the controls, the compliance controls and security controls. So policies and procedures may you also look into the controls part. What are the key controls that I have to follow? That I need to make sure that those things are there. So acceptable use policies for end user technologies. What are the key, how internally हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं. For example, acceptable, and we will go through creating acceptable use policy. There are templates, everything is there. We will go through all of them. But acceptable use policy at a high level, what happens is, if office ने आपको laptop दिया है, आप उस laptop को office purpose के लिए यूज करेंगे. ऐसा नहीं हो कि आप उसमें बैठ के Netflix देख रहे हैं. That's wrong. या YouTube देख रहे हैं. That is wrong. Right? Office laptop is for office purpose, and they monitor those laptops through different applications. So in this policy, you have to mention your laptops will be monitored. And if it is connected to the cardholder data network, it will be strictly monitored. All of these things goes into the acceptable use policy, right? So that's another thing that goes in there.
ये सारी जो चीजें हैं ना, whatever I'm telling you, this is part of the interview. So if you miss these classes, you missed everything. I'm not going to repeat that. So if anyone is studying DevOps SysOps, and if they're not studying this, they're gone. They can't ace the interviews. Don't come to me. उसने मुझसे सवाल किया, he asked me a question and I was not able to answer and I couldn't understand. He said to me, you have to create a PCI DSS compliant network on the SysOps, utilizing DevOps and SysOps processes. So they asked me कि मुझे explain करो कैसे होगा, and I couldn't. And I just started talking about मैं CI/CD की pipelines बनाऊंगा, मैं templates लिखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. Everything becomes irrelevant if you don't know the standards. So you have to follow the standards. Based on the standards, everything else is a complementary technology, right? So industry जो है ना, industry जो है ना main चीज है. The main thing is industry. देखो, know this, ये बहुत important है. If you know this, then तुम्हारे लिए जिंदगी में हर चीज आसान हो जाएगी. Then you can understand everything. Everything in this world revolves around key requirements. ठीक है ना? These are the key requirements, right? These are the key requirements. If you know these key requirements, everything becomes easier. So these are the key requirements, right? Key requirements. Let me make it clear ताकि आप लोगों को आसानी हो. Which are key business key requirements. Business key requirements or key business requirements. That's much better. Okay. So key business requirements are the key things that you have to follow. So key business requirements defines everything, whether it's DevOps, SysOps, AI, blockchain. The reason most of the people fail in their interview programs or in their careers is because they don't understand the key business requirements. They only focus on technology. Technology. No, that is wrong. So ये चीज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If you don't understand this, you will fail each and every interview. Even if I put you in front of the Fortune 500 companies, you will fail miserably. And you couldn't understand और तुम्हें समझ नहीं आएगी कि क्या करना चाहिए. You'll be staring at the interviewer, looking at his face or her face and saying, what is she saying or what is he saying? So know this, requirements, they trump everything. Everything else is a supplementary stuff. Sare departments jo hain, they revolve around key business requirements, right? So you have to understand these key requirements, and this is the most important aspect. Risk to the cardholder data environment are formally identified, evaluated, and managed. In the policy, आपको identify करना होगा कि क्या-क्या risks हैं, internal risks क्या हैं, external risks क्या हैं, systems के क्या risks हैं, are we doing vulnerability scans, or how tight are our DevOps and SysOps controls? कितने tight हैं? Are they tightly integrated? Bismillah. Excuse me. Just give me 1 minute. Accept my apologies. So everything has to be integrated. You have to look into artificial intelligence. Or AI kya kaam kar rahi hai? What is AI doing? Is AI able to understand the key risks? AI doesn't know key risks. You have to tell AI, these are the key risks we have to evaluate and keep an eye on. Then AI say, okay, I understand now. So these are all the key requirements. DevOps, SysOps, DevSecOps, offensive security, NOC, SOC, software development, QA ops, data ops. Collectively they are known as cloud ops or CIO ops. Everyone has to follow and understand the key risks. What are the key risks? Are they identified, formally identified, evaluated, managed, or not? Because if they're not, everything will get compromised, and the organization will be out of business. So we can't do that, right? इसके बाद आता है because देखो, तुम दुनिया के किसी भी business में जाओगे, wherever you go, in whatever industry, manufacturing, retail, power, nuclear, SCADA, robotics, automation, banking, finance, any sector you pick up, you have to comply with the policies and procedures
of that sector, because without it, it's a wild west. There is no, there is nothing. Similarly, like in the world, there has to be justice. If there is no justice, there is nothing, right? Then it will be like the law of the jungle, right? So these standards, they create justice. They create, like, I'm just giving you an analogy, but I'm just saying that they give you like the modes of operation of how to work within the organization. This is the most important thing, right? The next thing is PCI DSS compliance is managed. You have to manage the compliance. DevOps mein jao, SysOps mein jao. Don't make this mistake of saying, forget everything. I'm just going to go into DevOps, SysOps, AI, this, big data. Without even knowing this, you won't be able to do anything. You cannot go up in the organization. You will be standing at the same place for many, many years, right? Wahi khade rahoge. And time will pass away, and the next thing you know is like half of your life is gone and you're working in the same job for many, many years. So take this wisdom from me, which is very important. My 23 years of wisdom, I'm telling you right now, manage that very, very carefully. Understand the key business requirements, understand the risks, and everything goes into the policy. Sari cheezein policies, procedures mein hoti hain. I can give you many examples, from the Islam. As a Muslim, I can give you many examples, but for the shortage of time, I'm just going to stick to what we are going through right now. The most important thing is you need to define the scope of the organization. You can't employ this standard everywhere. It is not happening. You have to define the scope. In Islam, it is not necessary that everyone needs to be compliant. You need to create the leadership which is compliant. So this is very important, right? Because people will always try not to become, because it is in the habits of the people that they will always be rebellious and they will not be compliant to you. So you need to define the scope. If you go in and say, yaar, main sabko jo hai na seedha karunga, I'm going to make sure like everyone is straight. No, that's not happening. Some people will be straight. Some will be as crooked as a dog's tail, right? It will always be like crooked, right? And they will still be wagging at you. So you have to make sure that you need to identify, what are the key things that I have to comply with? What is my scope? So define the scope. The scope needs to be defined. Scope define karna hai. The scope is documented and validated. Aapne document karna hai. This is my scope. These are my systems where I'm going to make sure the policies and procedures, they are defining it. And this is my area that I have to protect, because you can't protect everything. It's not happening. I told you, this is a fool's errand to deploy. Even AI can't do it. You throw artificial intelligence on everything, artificial intelligence will say, this is too much data, I can't handle it. I need resources at a brainiac level. You know who Brainiac is? In Superman comics, there's a supercomputer known as Brainiac. It's artificial intelligence of the Krypton, right? It's the most advanced computer. So, you can't do that. It's impossible, right? You can't do it. So if I have to see, let me show you. I'm just trying to show you something. Just give me 1 minute, please. I was trying to find something like about Brainiac, but anyway, but the point is that you cannot do all of these things. Aap nahi kar sakte. You need to ensure that you are implementing, you are validating the scope. You need to define the scope. The scope is very important. The next thing you have to pay attention to is basically security awareness education is an ongoing activity. This activity is very important. Normally, in the policy, you define, all the key requirements. For example, phishing attacks, you have to inform about different kind of, masquerading attacks.
social engineering attacks. Because in any organization, कोई भी organization, people are the weakest link. लोग सबसे कमजोर link हैं. It's not the processes, it's not the technology, it's the people. Organization में, in any organization, there are three important pillars, right? Three important pillars. So ये policies के लिए समझना, this is an interview preparation actually for all of you. Whoever is sitting here will be able to ace any interview. Organization में there are three pillars. Pillar number one, this is pillar number one. This is pillar number two. This is pillar number three. The weakest pillar is pillar number one. The weakest. This is the weakest pillar. In any organization, any country, people are the weakest pillar. So for them, there has to be a security awareness, a compliance awareness. Right? You have to keep on doing that, because if they make a mistake, everything is compromised, right? This is the most important aspect. So remember this. इसके बाद आता है, personnel are screened to reduce risks from insider threats. This is very important, right? Because in many organizations, अगर आपके पास कोई ऐसा process नहीं है कि आप screen करें, like many political parties, they fail. The reason is they don't have people who are trustworthy. People are the weakest link. Either they are bought, or they are sold out, or basically they become disgruntled, right? Or they can be, and many other social or psychological reasons, right? So उस तमाम चीजों को deal करने के लिए you need to make sure personnel are screened in an ongoing activity. जिसके पास भी sensitive card का data का access है, कोई भी access है उसके पास, in any, if we are talking about PCI DSS context, it's that data. कोई और है, उसके ऊपर कोई और चीज है, whatever that concept is, you need to make sure कि आपके पास ना, आप उनको screen करें. For example, DevOps guys, they need to be continuously screened. SysOps guys, artificial intelligence guys, machine learning guys, blockchain guys, software developers. Anyone who's working on the critical stuff needs to be screened. Front end के ऊपर अगर receptionist बैठी हो, उसको भी screen करो. How do you do the screening? We will go through all of those requirements in our basically in our internship program. So we will go through all of that. So the live classes essentially will become our internship program. So there won't be live classes in the coming future. It will all be turned into our internship program, right? We'll talk about internship program later on. So ये चीज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You have to understand all the key requirements, right? So people are screened. उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक होता है, इसके ऊपर कोई डेट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ऐसी पेइंग हिज बिल्स ऑन टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके ऊपर क्रेडिट चेक्स होते हैं, फाइनेंशियल चेक्स, उसके ऊपर क्वालिफिकेशन चेक्स होते हैं, उसके ऊपर उसके एम्प्लॉयमेंट चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं पुलिस के, ठीक है ना. I had to go through basically security checks once a year, sometimes every 6 months, depending on what kind of data I'm touching, right? So these things are very important. Clearance levels, there are different clearance levels, right? So you have to go through all of those things. Next is risk to information assets associated with third-party service provider. This is very important. बहुत सारी organizations जो हैं यहाँ fail होती हैं because उनके बहुत सारे processes बाहर होते हैं, right? वो ना अपना cloud use कर रहे हैं. So they're using AWS cloud. Now, as long as it is their data residing in the AWS cloud or Azure or IBM or GCP or Alibaba or Oracle or whoever that cloud provider is, there are big four: AWS number one, Azure second, GCP third, IBM fourth. Then it becomes basically, these are the fourth providers, global providers in the world. Then we have Oracle, it comes there. Alibaba is the biggest one in China, like in that region, right? It's bigger than all of these four combined, because these four are global providers. Alibaba is over there in China only, not in other places. But like it might be in Africa and other regions. But hota ye ke na, normally what happens is that organizations kya karti hain कि वो अपना data रखती हैं and they say कि everything is compliant. No, that's not the case. That is not how compliance is achieved. So it is your data. They can only assure you compliance of those systems if they're patching it, securing it, etc., etc. But if anything happens to that data,
through them or through you, you are still liable. You're still liable. So इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. When we are going through the internship program, then you will see कि हमारी responsibility कहाँ है, cloud की responsibility कहाँ है, where is the fine line? Where is the fine line? That's very important to understand. चाहे वो DevOps हो, चाहे वो SysOps हो, चाहे वो blockchain हो, no matter what we do, all of these things, they are important that we understand the key aspects. The next is basically जो हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, the next जो इसकी requirement है, वो है third party service provider support their customers PCI DSS compliant. ये बहुत important है. अगर आपने PCI DSS जो भी किया हुआ है, TPSP, so third party service providers support their customers PCI DSS compliance. आपने जो है ना अपना सारा पेमेंट कार्ड का जो हिस्सा था आपने किसी और को दे दिया, ठीक है ना, आपका सारा कस्टमर्स का डेटा कोई और प्रोसेस कर रहा है, तो दैट्स फाइन, बट दैट इज नोन एज द TPSP, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वी विल गो थ्रू दोज रिक्वायरमेंट्स इन आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम. द लास्ट इज सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. अगर ये इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट हो तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से देखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, इन अ टाइमली फैशन. लेसन्स लर्न क्या है, so on and so forth, right? So these are the key requirements. इसका purpose क्या है, इसके testing approach क्या है, और इसका purpose क्या है, everything is written. जब हम इसको पूरा का पूरा बैठकर, when we are doing this completely in a whole, when we are doing the implementation in our internship program, because there you have to create, आप वहाँ जाके create करोगे, design करोगे, architect करोगे, create करोगे, you will do the design, the architect, the creation, the deployment, the management, and documentation. You will understand everything. Okay. In this program, in this level 3 diploma, we will go through each and every industry, right? So if you want to study 1 year, you can do that. Aap seekhte rahoge. If you renew it your second year, you will keep on learning new things. Third year, you will keep on learning new things, because essentially I will cover, मैं उसमें तमाम चीजें cover करूंगा, everything that you can think of, every standard, every industry vertical, all of these things, from the concepts of DevOps, SysOps, big data, AI, all of these aspects will be covered. So हम तमाम चीजों को cover करेंगे. None of those areas will be left behind. So we will create networks and we'll say कि इसका network का ये scope है, हम ये cover करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. But जाहिर सी बात है, जब उसमें DevOps की बारी आएगी, so if you're studying DevOps with us, then you will be able to join the DevOps team meetings as well, how they are creating and how they're assessing, and then you can learn there. But if you're here, then you can only get the glimpse of few things, but the other areas is where basically we'll be creating all the things, right? So that's the essentially today's class. Next class will start, we will do our next class on 15th of June. And because that is where we were starting our internship program, हम अपना internship program start कर रहे हैं. We will start going through all the programs, all the requirements, all the details, and we will jump into many other things as well to ensure कि हमारी तमाम चीजें complete हो रही हैं, we are able to complete all the things, और उसका network design करेंगे, architect करेंगे, systems को deploy करेंगे, test करेंगे. We'll do all the things, everything as per the PCI. So if you're going for an interview at a bank, financial institutes, wherever you want to work, it's up to you, right? I always recommend people not to work at banks for the Muslims. For the non-Muslims, they can work wherever they want, because banks are entities which deal in interest and riba. And as Muslims, we should shy away. We should not shy away, but we should completely abandon and walk away from anything which has to do with riba, right? We can open accounts. There is no other option, but we should not become part and parcel of those entities. But if someone wants to work, yes, they can work. That's our belief. That's what we follow, but other persons can do whatever they want to do, right? There is no compulsion in religion, as we say in Islam, la ikraha fi din. So we don't do that, but our goal is to ensure that, you know exactly what you want to do and how you want to do and how you have to do all of these things. PCI DSS is not only followed by banks, but banking regulations, they do other things as well, but any retail sector, they follow it. Online merchants, they follow it. There are different level of merchants. There are payment service providers. We are a payment service provider ourselves, right? We do that as well. But we only process payments. We don't deal in any other thing. So there's a lot of things that you will learn, inshallah.
So that is the class of today's topic. I will stop the video recording here. मैं यहाँ video recording रोक दूंगा, and I will sit here for another 15 minutes to take some questions, and then we will wrap up the day. ये जो lecture होगा ये record होकर आ जाएगा portal के ऊपर, and then you should be able to follow it through inshallah. Okay? जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. तो यूसुफ, ये तुमने ना सारी रिकॉर्डिंग करके ना, मतलब कि जो भी है उसको रख देना है पोर्टल के ऊपर वहां पर, और इसको कार्व आउट करके रखना. और प्लीज तुमने ना मुझे उनसे बात करवानी है, जैन भाई को और उन सबको, कि भाई जितनी क्लासेस हमारी हुई हैं उन सबको लाइन अप करके तरीके से रखें, ठीक है. और यूनी कोर्स की लॉन्च करना तैयारी करनी है ताकि हम सबको वहां पे लेकर आए. यहाँ पे चैट खोल सकते हैं. वी कैन ओपन द चैट. एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन आस्क. जी मोहम्मद कामरान साहब, आपका सवाल हो गया था. अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल है। जी जी बोलिए. कैरियर ट्रांजिशन अभी मैं करने वाला हूँ, तो उसमें सिक्योरिटी इंडस्ट्री में नॉन टेक्निकल फील्ड, हाई पेड इनकम, कौन सी डेजिग्नेशंस या कौन सी फील्ड है, उसके बारे में मालूम करना था। नॉन टेक्निकल फील्ड रही नहीं कोई, ठीक है ना. आई मीन बहुत मुश्किल है. पॉलिसी राइटिंग भी टेक्निकल हो गई है. ऑटोमेशन इतनी आ गई है कि आपको उसके ऊपर भी काम आना चाहिए. सो ये कहना कि नॉन टेक्निकल कोई फील्ड आपको मिल जाएगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी. आपको कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ आनी चाहिए. आपको दूसरी चीजें सीखनी पड़ेंगी. पाइथन काफी है ना? सॉरी, पाइथन पाइथन काफी. अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है ना, अगर पाइथन आती है, आप दुनिया में सारे काम कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको, देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत आसान है. इनसे डरा नहीं करो. दे आर वेरी इजी. ये डरना, समझना कि यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, दैट्स रॉन्ग. तुम बहुत सारे काम कर सकते हो. थोड़ा सा वक्त लगाना होता है, थोड़ा सा टाइम लगाना होता है. इवन के जो मैनेजेरियल लोग हैं, जो डायरेक्टर लेवल पे लोग हैं, वो भी टेक्निकल होते हैं. तुम जैसे गूगल में काम करते हो, गूगल में सारे कौन है? गूगल में हर बंदा प्रोग्रामर होता है, ठीक है. अगर तुमने प्रोग्रामिंग सीख ली और तुम उनके पास गए कि यार मैंने प्रोग्रामिंग सीख ली और मैं ना मून लाइटिंग कर रहा था, मैंने सारा काम भी सीख लिया, मुझे मौका दो यहाँ काम करने का, दे विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. तुम्हें काम देंगे, ठीक है. तुम्हें आगे लेके जाएंगे. तुमने अगर उनका ना, लेकिन वो तुमसे टेस्ट लेंगे. गूगल में काम करने के लिए वो तुम्हें हमेशा पाइथन के कुछ यूज केसेस देंगे और बोलेंगे कि ना आप जाके इसमें काम करें, ठीक है. तो अगर तुम इसमें काम कर सकते हो तो तुम्हें मौका मिल जाएगा उसका. सो टेक्निकल चीज तो हर जगह है. एक और तुम्हें फायदा बताऊं. कामरान, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान, राइट? कामरान मोहम्मद अजीज. कामरान अजीज। अजीज. सो देखो कामरान, ये जो बड़ी आसान चीज है, एआई की वजह से ना अब प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो गई है. अब तुम कहीं फंसते हो ना, तो तुम एआई से मदद लो. एआई कोड बहुत अच्छा नहीं लिखती, लेकिन इतना लिख लेती है कि तुम्हें इंडिकेशन मिल जाती है और तुम वहां से आगे बढ़ के जोड़ के कर सकते हो काम, ठीक है. चैट जीपीटी के बारे में बोल रहे हैं। चैट जीपीटी है, बार्ड है. बार्ड भी बड़ा जबरदस्त है. बार्ड ज्यादा एडवांस है. चैट जीपीटी जो है ना, बात करने में अच्छा है. इट वॉज डिजाइन लाइक दैट. बार्ड जो है ना, इंफॉर्मेशन निकाल के देता है सारी. हमने उसको चेक किया. हमने एक वेबसाइट खड़ी की. अभी इसको डिप्लॉय नहीं किया, इंटरनेट पे करने वाले थे. हमने उसको किया, 5 मिनट में बार्ड से सवाल किया, तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में पता है? उसने सब कुछ निकाल के दे दिया. यानी कि उसका मतलब है कि वो रियल टाइम पे जाके चेक कर रहा है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन निकाल रहा है. तो बार्ड जो है ना, इसलिए उन्होंने दुनिया में सब जगह लॉन्च कर दिए सिवाय यूरोपियन कंट्रीज में. G20 कंट्रीज में जहां पर प्राइवेसी के रेगुलेशंस है वहां छोड़ दिया, जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया. बाकी सब जगह रिलीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह रियल टाइम में करना. अगर तुम पूछो ना, अगर तुम चैट जीपीटी से पूछो कि तुम्हारा नॉलेज का कट ऑफ क्या है, वो बोलेगा सितंबर 2021 के बाद मैंने कोई चीज इंटरनेट पे नहीं पढ़ी, मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. तो मेरे पास पुराना डेटा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ. ये फर्क है. बार्ड इज मच मोर इंटेलिजेंट, ठीक है. और ये जो टूल्स है ना, ये सारे देखो, इन टूल से डरना नहीं चाहिए. ये कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर देंगे. हाँ, छोटी छोटी जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें जो है ना बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे कि तुम्हें असिस्टेंस होगी. आइंदा आने वाले फ्यूचर में लोग इसी को इस्तेमाल करके काम कर रहे होंगे. जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लोगों की, ठीक है ना. छोटे लेवल की जॉब्स जो है ना, वो एआई नहीं खा रहा, वो ऑटोमेशन खा रही है, ठीक है ना. मशीन लर्निंग जो है, स्वीपर की जॉब चली जाएगी, रेज्यूमे राइटर की जॉब चली जाएगी, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब चली जाएगी. जो चीजें वो आसानी से सीख सकता है वो चली जाएगी.
ठीक है ना। अगर तुम कंप्यूटर को बोलो कि यार तुम पूरा मैनेज, रिस्क को मैनेज करो, सब कुछ करो, ये करो, बोलेगा क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, पॉलिसीज बनाओ, किससे बात करूं। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वहां पर जॉन बैठा हुआ है, वहां पर सैली बैठी है, वहां पर डेव बैठा हुआ है, मैं किससे बात करूं, उधर कामरान भी बैठा हुआ है। आई डोंट नो, राइट। वो इस लेवल पे नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस एक्सटेंशन, अभी जो इंडस्ट्री है ना, इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रही है। बहुत सारी छोटी जॉब्स जा रही हैं, लेकिन बिलियन जॉब्स नई भी तो क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। अगर 300-400 मिलियन जॉब्स हट रही हैं, ड्राइवर की, लोडर की, फलाना की, रेस्टोरेंट में जो बर्गर फ्लिप कर रहा है उसकी, उसके लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए ना। बर्गर इतने पे फ्लिप करो, निकालो, इधर करो, उधर करो, चिप्स निकालो, टेम्परेचर चेक किया जी, सही है, ठीक है, निकाल लिए, चिप्स दे दिए आपके लिए। ठीक है। वो बंदा नहीं। अब तुम मैकडोनल्ड पे जाओ, तो इन तुम इंडिया में हो, जहां पर भी हो, वेरेवर यू आर, तुम उसमें जाके ऑर्डर कहाँ से करते हो? अब लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, कियास्क में ऑर्डर होता है, राइट। तुम ऑर्डर करते हो, चीज आ जाती है। दैट इज अ डिफरेंस। तो ऑटोमेशन को एम्ब्रेस करो टू असिस्ट योर सेल्फ टू गो फॉरवर्ड। ठीक है ना। छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा जी मेरी किताब पढ़ लें, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, और आप जो है ना चैट जीपीटी से थोड़े पैसे बना लेंगे, कर लेंगे, वगैरह, सब बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, आपको टेक्नोलॉजीज का प्रॉपर सीखना पड़ेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट को सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जाओगे, छोटे मोटे पैसे बनाना अलग है, बड़े पैसे बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। छोटी, देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। इफ यू डू दैट, यस, यू कैन बी सक्सेसफुल। जी अंताश अहमद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। अच्छा, मेरा थोड़ा सा irrelevant क्वेश्चन तो if you allow me तो I can ask, बट थोड़ा बेसिक। अगर सवाल काम का होगा मैं जवाब दूंगा, नहीं होगा तो शायद मैं नहीं दूंगा। बोलिए, इररिलेवेंट अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कोई भी हम ट्रैक लेते हैं CCSP या डेवऑप्स वगैरह, तो अगर उसमें जो जैसे कर्ज हंसना वाला ऑप्शन है, तो जब कर्ज हंसना हम ले भी लेते हैं तो फिर भी समटाइम उसमें जो अमाउंट आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खुल के बात करूँ, जैसे 5,000 मंथली उसमें आ जाता है, ठीक है, विच इज़ अफोर्डेबल। बट मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपसे कि जब मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी तो हमारे एक जानने वाले हैं वो, तो मैं भी CCSP का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने किसी को रेफर किया था, वो चिकन वाले अंकल हैं, उनको वो पूछ रहा था मेरा बेटा है उसके लिए, तो मैंने उनको रेफर किया था कि आप अपने बेटे को यहाँ पे ये CCSP वगैरह करा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला है बेटा ये कर्ज हंसना के बाद भी थोड़ा सा महंगा है, तो इसको इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ज हंसना है ही अगर, तो उसकी प्राइस थोड़ी और कम हो जाए, क्योंकि तो अगर एक बंदा कर्ज बहुत अच्छा ले रहा सवाल है है, वो वापस तो बहुत अच्छा सवाल है, करना है। लेकिन प्रॉब्लम देखो ये है ना एक कि एक चीज ऐड करनी है बस, मैं हाँ, एक कंप्लीट नहीं हूँ। एक चीज ये कि फॉर एग्जांपल ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि मैरिड हैं वो, ठीक है, उनकी फैमिली भी है, पेरेंट्स भी है, ठीक है, सब चीज़ों को देखना होता है, और वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि CCSP ले लें, बट वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते एक्सपेंस, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई अगर कर्जे असना में ऑप्शन ऐसा नहीं है कि थोड़े और कम कर दिए जाए प्राइस, तो फिर जब उनका ट्रैक कंप्लीट हो जाए वो फिर आपको पेमेंट रिटर्न करना। ये बस मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पर भी मुझे आंसर दे। देखो मैं जवाब दे देता हूँ उसका, अगर ये सवाल पहला खत्म हो गया, ठीक है ना। सवाल अच्छा है, ये इररिलेवेंट सवाल नहीं, रेलेवेंट सवाल है। ठीक है ना। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में, सब जगह दुनिया में, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बुरे हालात हैं, 500 साल पीछे चले गए हम लोग, राइट। और लेकिन मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि असल में हम लोग जो है ना, वेस्ट में रह कर ना, और वेस्टर्न फिलॉसफी से वो ना मरगूब होके हम कहते हैं कि यार जो है ना, हमें कुछ ना कुछ दे दो, हमें किसी तरह कुछ ना कुछ कर दो, कि ना हम जैसे तुम्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, वो ज़कात लेते हैं, लोगों को पढ़ा देते हैं, फितराना लेके देते हैं, लोगों को पढ़ा देते हैं। हम वो काम नहीं कर सकते, राइट। इस्लाम में ज़कात सिर्फ, जो मैं खुद भी स्कॉलर बन रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई बहुत ज़्यादा कलील इल्म है, कोई बहुत वसी नहीं है, वसी किसी का नहीं है अल्लाह के सिवा। ठीक है। मगर मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि भाई ज़कात जो है वो आपको किसी के हाथ में देनी होती है, जिससे उसको फ़ायदा हो जाए ना, जो भी है ना। अब वो उसके ऊपर पैसे पे लगाए, जहाँ वो खुद लगाए, जो भी है उसकी अपनी मर्जी। हाँ, खाने पीने की चीज़ देते हैं एक अलग बात है, जो भी जिस तरह से भी है, लेकिन मैं उसको बोलूँ कि यार मैं ज़कात कहीं से और से लूँ तो मैं दे दूँ, वो नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी कॉस्ट होती है, मेरी कॉस्ट ठीक ठाक है, ठीक है।
$3 लाख से ऊपर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना, मेरे सामने मैं तुमसे बोलूंगा यार मैं वुजू में हूँ, तुम बात नहीं मानोगे। मैं बोलूंगा यार कुरान मेरे सामने हाथ रख के बोलता हूँ, तुम फिर भी बात नहीं मानोगे, ठीक है ना। बोलोगे यार ये तो सब झूठ बोलते हैं। तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि भाई मेरी $3 लाख से ऊपर सिर्फ क्लाउड की कॉस्ट होती है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे यार $3 लाख, जी $3 लाख, ठीक है। अच्छी खासी क्लाउड की, और वो बढ़ रही है बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूसेज जो लोग कर रहे हैं। उसमें आपको कंटेनर मिला, सब कुछ मिला हुआ है। मैं किसी से पैसे नहीं ले, मैं अभी तक इस बिजनेस में 5 साल में $5 मिलियन से ऊपर लगा चुका हूँ। मैं बोलूंगा तो मैं $5 मिलियन लगाया, तो बोलोगे यार अजीब पागल आदमी है, $5 मिलियन लगा चुका है बिजनेस के ऊपर, सालाना $1 मिलियन जेब से लगा। सो यू सी, वो $5 मिलियन मैंने अभी तक बिजनेस से वापस लिए नहीं है, मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे वो बिजनेस में और आगे बढ़कर उसको यूनिवर्सिटी बनाना, सब कुछ करना है। बट दैट इज लॉस्ट, दैट इज गॉन, ठीक है ना, चले गए, ठीक है ना, चले गए, लग गए, ठीक है। और वो आ भी गए बिजनेस में, लेकिन वो वापस में अब दूसरी चीजों में लग रहे हैं ना, तो मैं अगर निकालूंगा फिर कहाँ से उसमें, तो फिर मुझे वापस डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंने ही निकाल के डाले थे, ठीक है ना। अब ये थोड़ी आ गए तो मैं निकाल दूं उसको, तो फिर बाकी का क्या होगा, बाकी कॉस्ट कहाँ जाएगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास ना एक शख्स आया, भीख मांग रहा था। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि इससे बेहतर है कि तुम माशरे में जो सबसे बहुत ही लोअर क्लास की जॉब है ना, तुम वो कर लो, लेकिन तुम किसी से पैसे नहीं मांगो, ठीक है ना, बिकॉज तुम्हारे लिए अल्लाह सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, जहाँ पर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम से हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। लेकिन जो उनसे हो सकता है ना, अगर किसी को बिल्कुल फ्री में दो तो वो पढ़ता ही नहीं, अगर इसको मिनिमाइज कर दो तो हमारी कॉस्ट कम से कम जो है ना, जो हमारी 60% कॉस्ट निकले, अगर हमारी 60% भी कॉस्ट नहीं निकलती, वो 5,000 रुपये, तो हमें बहुत लॉस होता है, ठीक है। लोग छोड़ के चले आते हैं, लोग छोड़ के चले जाएंगे, बीच में पैसे नहीं देंगे। हमारी कॉस्ट जब वो यूजर क्रिएट होता है ना, वो कॉस्ट अकाउंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट से पैसे नहीं कमाता, दैट इज हराम। मैं बहुत सख्त आदमी हूँ उसमें, बहुत सारी चीज़ों में, मामले में, ठीक है। तो सख्त नहीं है वो, बेसिकली वो सुन्नत है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं सख्त, यार तुम बहुत सख्त हो। भाई ये कुरान की आयत लिखी है, अदर यू टेक इट आउट ऑफ द कुरान और यू एक्सेप्ट इट, दिस ओनली वन वे और दी अदर, ठीक है ना। ये जो ना, ये आधे इधर आधे उधर, ये हाफ एंड हाफ नहीं होता, या अदर यू फॉलो इट और आधे यू डोंट फॉलो इट, सो जस्ट थ्रो इट आउट, ठीक है ना। लेकिन उस पर लोग जो है ना कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो मिनिमम है ना, वो मिनिमम किसी वजह से है, इफ यू फॉलो दैट इट्स इजियर। नाउ उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं, एफिलिएट का एवेन्यू है, आप पैसे कमा लें, आप उससे मेहनत कर लें, लोगों ने पैसे कमाए उससे, लोग कमाते हैं उससे पैसे। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। मैं किसी के ऊपर ना वो नहीं कर सकता। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन। जितना मैं करना चाहूँ कर सकूँ मैं करता हूँ, लेकिन जब मेरी गुंजाइश नहीं होती तो फिर मैं नहीं कर पाता, ठीक है। और मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांगता कि यार मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। आई ओनली डू व्हाट आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फैसल भाई, इस पे मेरे दो, अच्छा सर, बोलिए। मेरे अस्सलाम वालेकुम। काउंटर आर्गुमेंट हैं दो। हाँ, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट का क्या फायदा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम कह रहे हो यार काउंटर आर्ग्यूमेंट छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, फिर तो कोई कैन आर्ग्यूमेंट बी नहीं बेनिफिट। करता। काउंटर आर्ग्यूमेंट देखो उस वक्त हो ना जब तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हो, तुम्हारे, तुम बोलो यार फैसल भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट, मैं पैसे देता हूँ, आप चलाए सब, तो चलो आ जाओ काउंटर आर्ग्यूमेंट कर लो। लेकिन मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको कि जिससे पैसे बनेंगे। देखो आइडियाज, देखो आइडियाज पे ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना, आइडियाज बहुत सारे लोगों के, ठीक है। किसी ने मुझे आइडिया दिया कि यूट्यूब को आप मोनेटाइज करना शुरू करें, मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उसमें शराब का ऐड आ रहा है, फलाना फलाना, हाउ कैन यू डायसेक्ट योर इनकम थ्रू दैट। नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होता, फलाना मुफ्ती कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। मैंने कहा कर रहा है, गलत कर रहा है। फिर मैंने कहा भाई देखो अल्लाह ताला कुरान में ही कह रहा है, ठीक है ना, तो वो देख रहा है, आयत को पढ़ रहा है, उसने कहा ये तो सही है। तो मैंने कहा फिर ये क्या, इसमें इज देयर एनी डाउट, कह रहा नहीं डाउट तो नहीं। मैंने कहा देखो मैं वीडियो खोलता हूँ यहाँ से, और देखो एडवर्ट क्या आता है। तो मैंने कहा देखो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि ना मैंने जो है ना वेकेशन पे जाना है, फिर मैंने मुफ्ती साहब का चैनल खोला, पाकिस्तान के बहुत बड़े कोई मशहूर मुफ्ती, ठीक है ना। मैंने कहा चैनल खोला, मैंने कहा अब देखो एडवर्ट कैसा आ रहा है, बीच पे बंदी आ रही है, जंप मार रही है, पानी में आ रहा है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा कैरिबियन हॉलीडे पे मुझे जाना है। मैंने कहा दैट्स द प्रॉब्लम। अब मुझे सारी चीजें गलत मैंने देख ली,
ठीक है, हाउ कैन आई सेगमेंट, हाउ इज ही एबल टू सेगमेंट दिस थिंग, कि कैसे निकालेगा उसको बाहर, कैसे करेगा। खामोश हो गया वो। फिर मैंने कहा जाओ फिर बैठ जाओ तुम उधर, ठीक है। तो भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने से बेहतर है कि जाके काम कर लो, ठीक है ना। देखो, आइदर यू पुट द मनी वेयर योर माउथ इज, और यू डू द अदर थिंग व्हिच इज बीइंग क्वाइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अंताश अहमद साहब, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड द सोसाइटी इज ऑल अपसाइड डाउन। जी इमाद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा वैसे भी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह याद रखें। जिस तरह लाइक टेक्निकल में तो हम अपने नोट्स बना लेते हैं जो भी हम कोर्स पढ़ रहे हैं डेवऑप्स सिसऑप्स का, लेकिन जब हम ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह चीज़ों को याद करके एक इंटरव्यू में के टाइम हम इंटरव्यू को बता सकते हैं कि हम ये चीज़ को इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। क्योंकि एक जब आप सीरीज ऑफ बुक्स और नोट्स उसके लिए आपको चाहिए, और एक बंदे को जिसको इंडस्ट्री का भी आइडिया है कि वो इंडस्ट्री में इस तरह काम होता है, तो हाउ कुड बी रीडिफाइन कि हम इस पॉलिसीज को इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत लाइक क्वेश्चन है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का। तो उसके हाउ कुड उसके इट हेल्प उसके अस? ना, देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कोई याद नहीं करता, तुम्हें उसके पिलर्स याद होने चाहिए, द फाउंडेशन पिलर्स, ठीक है ना। अगर इफ आई शो यू द स्टैंडर्ड, अगर तुम स्टैंडर्ड देखो, द वन दैट वी वर लुकिंग एट, ठीक है ना, अगर मैं उसको खोलूं, लेट मी गो बैक, ठीक है, एंड लेट मी ओपन द स्टैंडर्ड क्विकली। अगर तुम स्टैंडर्ड को देखो, यू डोंट मेमोराइज, देखो बिकॉज स्टैंडर्ड्स कीप ऑन चेंजिंग, आई मीन चेंज होते हैं 4 साल 3 साल 4 साल के बाद चेंज होता है, माइनर माइनर चेंजेस आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि फॉरेन से हो जाए, जो भी है, बट यू डोंट मेमोराइज द पॉलिसी कि यार पॉलिसी में ये होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, यू डोंट डू दैट, ठीक है ना। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जो मेन टेनेंट्स हैं उसके, जो मेन कैनन्स हैं, जिसे कहते हैं मेन कैनन्स, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें मैंने कहा कि भाई वो डायग्राम बना के दिखाया, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्टैंड्स ऑन 3 पिलर्स, 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर खड़ा होता है, ठीक है ना। पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसको घुमा देती है, जैसे टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, पीपल, पीपल का आखिर में कर देते, एंड दे फेल। सो तुम इस तरह बोलो, इस तरह इशारा करो, इट ऑल कम्स डाउन टू, यूं करो, पीपल, processes and technology. And most of the policies and procedures, when they fail, is because organizations look at them through this. They turn it the other way around. They focus on technology and they forget about processes and people. So we need to focus on the people. DevOps, SysOps, DevSecOps, anything ops, access ops, जिसे कहते हैं, cloud ops, QA ops, AI ops, all of these guys needs to be compliant with the policies and procedures, right? इन सबको करना है, और वो कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे से करना है, all of these things. So we have to follow all of these things, and you have to do that. And my job as an IT auditor or system auditor or DevSecOps guy or a DevOps guy is to make sure, SysOps guy, जो भी तुम काम कर रहे हो, is to make sure that I always follow the 3 tenets: people, processes, and technology. So I understand, I know who the people are, then I meet them and deliver them the processes or understand their processes, and then I work on the technology part, right? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो टेनेंट्स याद रखो, पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी। अब पॉलिसीज में डेवसेकऑप्स की पॉलिसी आ गई है, ठीक है ना, अब उसमें सिसऑप्स डेवऑप्स को मिला के कर दिया है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चीजें जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है ना, देखो तुमसे पूछेगा, तुमसे बोलेगा यार कि पाइथन की एपीआई मुझे बनानी है between 2 applications so that we can pull the data from one application into another application for visualization. What should I do? Tum bologe? Okay, that's a good question. My first question is going to be, what kind of data is it? Is it credit card data, PII, personally identifiable information? I need to know, because if it's not sensitive data and it's just anonymized data or anything like that, I can simply, just create a simple non-secure API or whatever. I mean, I'm not going to emphasize on security that much. And there's no non-secure API. Every API has to go through security protocols, like it has to use TLS and all of these things. But I will not emphasize on security at that point, because it's not sensitive data. But
If it's sensitive data, then I have to look at the policies, the procedures, the technology part. I have to look at all the other aspects to make sure that when I design the APIs, it meets all the requirements. Then I'm going to ask you, okay, does it has to be on what kind of framework? Python, Django, what kind of language, first of all? Is it Python, C, Java, what is it? .NET. Second question is going to be, I've selected the language, Python. Is it Python, Django? What standard do I have to follow? What framework do I need to follow? The third question is going to be, is it Python here and PHP there, or is it Python and Python? Like it's all standard stack or mixed stack, or what is it, right? So tum yahan aake rokoge bologe, these are all the things I have to ask you before I can even start the DevOps process or the SysOps process or the AI process. I mean, all of these processes requires me to understand the key business requirements. ठीक है, अगर तुम वहां बैठ गए, तुमने बोला कि ना, I'm going to use Ansible to create all of these policies to make sure, like, the CI/CD pipelines are compliant, and I'm going to use AWS. हम देख नहीं रहे ना कहीं, doing eye contact, बोलेगा यार something is wrong. ठीक है, बोलेगा यार something is wrong with this guy, ये रट्टा मार क्या है? Don't do that. We have started a new service where we will recommend people as potential employees in Fortune 500 companies, but they need to pass EduCall exam. EduCall exam pass नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते आगे, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगी बहुत, ठीक है ना, because वहाँ इंटरव्यू मैं तुम्हारा लूंगा, मेरे जैसे बंदे इंटरव्यू ले रहा हूँ. If you can pass my interview, you can pass any other interview. फिर तुम जा सकते हो. फिर हम बोलेंगे हाँ ये हमारा बेस्ट बंदा है, इसके साथ बात करो, ठीक है ना, इमाद, ठीक है ना, talk to him. He will satisfy all of your key requirements. He has done level 3 diploma with us, level 4 and level 5. He knows DevOps, SysOps, AI as the back of his head. He knows all the key business requirements, and we can put him forward. And then you can go. So these are the key requirements जो बच्चों को हम उसके ऊपर करते हैं, ठीक है ना. So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आया भाई ये बात. सो मेमोराइज नहीं करो पॉलिसीज, यार पॉलिसी में एब्स्ट्रैक्ट है, ये है वो है. अब तो मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है ना. अब तुमने कहा यार पॉलिसी बनानी है, और यार कुछ चक्कर ही नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है. तुमने अब देखो, ये है, तुम्हें यहाँ से आगे सीखना है, ठीक है ना. यहाँ से आगे तुमने सीखना है कि यार हम काम कैसे करेंगे ना. तो तुम यहाँ गए, ठीक है ना, यू कैन सी माई स्क्रीन. तुमने चैट जीपीटी लिखा और तुमने यहाँ GPT-4 सेलेक्ट किया, ठीक है, और तुमने इसको बोला कि भाई क्रिएट PCI DSS रिक्वायरमेंट 1 पॉलिसी. चैट GPT-4 यूज करना है बिकॉज ये सबसे अच्छा है. बार्ड भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है ना. क्रिएट PCI DSS रिक्वायरमेंट 1 पॉलिसी फॉर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना. सही है. अब ये याद रखना कि इसका जो कट ऑफ पीरियड है, पहले तो तुझसे पूछो कि व्हाट इज योर नॉलेज कट ऑफ पीरियड. ये बताएगा कि भाई सितंबर 2021. अब जो PCI DSS लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, जो स्टैंडर्ड अपडेट हुआ था मार्च 2022, राइट. ये रहा ना, नजर आ रहा है PCI DSS यहाँ पर अपडेट हुआ था. तो इसको पता ही नहीं कि क्या है PCI DSS. अब ये नहीं पता ना, इसको देखो यहाँ ये आके मार्क आ जाता है ना यहाँ पर, ठीक है ना. तो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा आगे होगी, ठीक है ना. तो उसके बाद बोला आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स दैट हैव अकर्ड आफ्टर. इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. तुम खैर भी फिर भी पूछो PCI रिक्वायरमेंट एज पर PCI DSS स्टैंडर्ड वर्जन 4 आया ना. देखते हैं तुक्का मारता है, क्या करता है नहीं करता, ठीक है ना. देखो बनाएगा, देखो बोल रहा है कि यार ये तो हमारा मसला हो गया, मुझे नहीं मालूम इसका. वर्जन 4 जो है ना वो उस तक पब्लिश नहीं हुआ था. मैं वर्जन पुराना जो 3.2.1 है ना उसके हिसाब से कर लेता हूँ. देखो 3.2.1 क्या था, इसके अगर नीचे जाओगे ना 3.2.1 सितंबर 2022 में आया था. तो उसका इसको पता है, ठीक है ना. उसने कहा कि बस यहाँ तक मुझे पता था, इसमें थोड़े माइनर अपडेट्स हुए थे, तो ये सितंबर तक चल रहा था, ठीक है. तो इसमें देखो बता रहा है, तो ये देखो पूरी पॉलिसी उसने बना दी, स्कोप बना दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर्स लिख दिए, पॉलिसी कंप्लायंस लिख दिया. उसने कहा ये पूरे पॉलिसी का टेम्पलेट हो गया. सो डोंट मेमोराइज दीज थिंग्स, बी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ टू यूज दीज थिंग्स. तो तुम लोगों को कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, तुम लोग को अब कोई मेजर चीजें नहीं सीखनी, क्योंकि अब तुम्हें इसकी वजह से काम आसान हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है. बट द जॉब्स आर देयर, जॉब्स उधर ही हैं, जॉब्स उधर ही खड़ी हुई हैं. उनको फिर भी कोई बंदा चाहिए जो आगे करे. अभी AI इस लेवल पे नहीं है कि वो कर ले.
AI कभी भी इस लेवल पे नहीं आएगी कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सब बंदों को फारिग कर दो, AI खुद बैठ के चला रही है। मंडेन टास्क जो वजन उठाओ, इधर रख दो उधर रख दो, बर्गर फ्लिप कर दो, गाड़ी इधर से उधर लेके चले जाओ, ये वो कवर कर सकती है। जहां इंटेलिजेंस आती है, बिजनेस इंटेलिजेंस, सब चीजें आती हैं, हमने अपनी चीजें बेचनी है, सर्विसेज बेचनी है, सब कुछ काम करना है, ये करना है वो करना है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो AI को डरो नहीं, AI को एम्ब्रेस करो, फायदा है, ठीक है ना। वैसे भाई एक मेरा क्वेश्चन और था जी कि अब जो ये पाकिस्तान की मार्केट है, यहाँ पे मैंने एक 2-3 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि मैं डेवऑप्स के कोर्स में हूँ आपके, तो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती है और इवन वो आपको 1 लाख तक सैलरी भी ऑफर कर देते हैं, तो बहुत इज इट जी जी सॉरी आसान है 1 लाख तक सैलरी पकड़ना पाकिस्तान में, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो इज इट फिजिबल कि हम इधर पाकिस्तान में रह के इन जॉब्स को टारगेट कर लें, या फिर हम जिस तरह मैं बात करूँ, मेरा प्लान था यूके जाने का, लेकिन अब जिस तरह के हालात हो गए, इवन पाउंड भी जो है वो 350 क्रॉस कर चुका हुआ है, तो इतना एक अफोर्ड करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम बजाय यहाँ पे रह के करने के, हम थोड़ा सा मिडिल ईस्ट यूई वाली साइड पे चले जाएं और वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्टेप देखो, आज से 4-5 महीने पहले ये हालात नहीं थे, एकदम से हालात हुए ना, ठीक है, हो सकता है 500 बिल्कुल का, हो सकता है 500 का हो जाए, क्योंकि वो इस जगह ना वो देखो बड़ा मसला हुआ ना, देखो ये हम पॉलिसी देखते हैं ना, दोबारा से लेट्स गो टू द पॉलिसी, राइट। हम पॉलिसी देख रहे थे ना, तो जो पॉलिसी थी क्या था, स्कोप, ठीक है ना, डिफाइन द स्कोप, ठीक है ना, किसी ने स्कोप डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है ना। पर्सनल आर स्क्रीन टू रिड्यूस द रिस्क, ये भी नहीं हुए, तो इस वजह से जो है ना वो, उसने कहा मेरे साथ सब लोग खड़े होंगे, ठीक है ना, कोई खड़ा नहीं हुआ, सब भाग गए, ठीक है ना, सबने अपने आप को बेच दिया, वो आखिरी पागलों की तरह खड़ा हुआ उधर ही, ठीक है ना। तो वो लेकिन वो फायदे में, उसको चाहे लोग कुछ भी बोले, उसने ये एक्सपोज कर दिया। उसके साथ गलतियां हैं, ऐसा नहीं है इमरान खान के साथ गलतियां नहीं है, उसके साथ भी मसले हैं। उसको बहुत दफा बोला कि भाई दीन पे सीधे सीधे चल लो, उसमें भी थोड़ी अकड़ है, थोड़ी बदमाशी भी है, वो थोड़ा ये भी है, अगर थोड़ा सा और दीन पढ़ लेता तो बड़ा फायदा होता उसको, ठीक है। लेकिन उसमें यह है ईमानदारी है, उसने कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, वो चोरी वोरी नहीं मिली तो उन्होंने कहा हमको किसी तरह तो गिराना है, तो अब तो पाकिस्तान में चोरों का राज है, ठीक है ना। इससे तो बहुत नुकसान होगा, तो आइंदा पीपल कुछ को टारगेट किया ना 500 पे पाउंड चले जाए, 500 रुपए हो हम्म, सकता है। उसके लिए जो बेस्ट तरीकेकार है तुम लोगों के लिए, पाकिस्तान में 1,000-1 लाख की अगर जॉब मिल रही है पकड़ लो, और यहाँ से फिर रास्ता बनाओ मिडिल ईस्ट जाने का, और मिडिल ईस्ट में 4-5-6 महीने काम करो, पैसे जमा करो, फिर आगे जा सकते। क्योंकि अगर तुमने डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़ लिया, डेवऑप्स सिसऑप्स एआई, देखो अगर तुम कुछ नहीं पढ़ सकते तो तुम जो है ना ये क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, ठीक है ना। अगर तुम लेवल 3 का डिप्लोमा कर लो तो तुम जॉब पे लग जाओगे। अगर तुम डेवऑप्स में काम करते हो तो तुम्हारी 1,00,000-1.5 लाख की तो 3-4 महीने 6 महीने में जॉब हो सकती है। जैसे वो लड़का है कि मैं जो ना 8 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं इसके बाद उसके साथ बैठूंगा, बोलूंगा देखो तुम्हें ये करना है, ठीक है ना। मैंने बताया तो उसकी 3 महीने में जॉब लग जाती है, लेकिन उसको वही काम करना पड़ेगा जैसे दूसरे एक एक चीज को लिखो, मैंने कहा एक एक चीज को लिखो, सुन रहे हो ना, लिखो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको बोलूंगा समियाना व आताना, सुनो, लिसन एंड ओबे, ठीक है ना, ये नहीं कर ला समिया ला आता नहीं करना, समियाना व आताना तुम्हें करना होगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा तुम्हारी जॉब हो जाएगी, ठीक है। तीसरी जो चीज जो है, जब तुम यहाँ से लग गए तो तुम निकल गए ना, तो या तो अगर कुछ नहीं, देखो मिनिमम तुम डेवऑप्स या सिसऑप्स दोनों में से कोई एक पढ़ो, डेवऑप्स पढ़ते हो, सिसऑप्स को मिला के पढ़ते हो, बहुत अच्छा है, एआईओप्स के साथ मिला के पढ़ते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये जॉब्स अभी खड़ी हो रही हैं, इसमें तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत पैसे मिलेंगे। अगर आम बंदा डेवऑप्स सिसऑप्स का 10,000 dirham पे जा सकता है, 10,000 dirham स्टार्टिंग पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी है। यंग बंदा है, अकेला जा रहा है, 10,000 dirham मिल रहे हैं, ठीक है, सही है ना। 6 महीने में अगर काम किया, सारी चीजें खत्म कर ली, सब कुछ निकाल लिया, तो वो 10,000 dirham की जगह वो जो है ना 15-20 पे भी जा सकता है। मेहनत करें ना जरा, ठीक है, काम अच्छी तरह है। अगर एआई ऑप्स पढ़ लिया, जिसमें डेवऑप्स सिसऑप्स एआई तीनों पढ़ाई जा रही है, जिसपे काम हो रहा है, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर काम हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ये है कि सबसे पहले वो अपनी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उनके पास पैसे बहुत है, पैसे फेंकते हैं, चलो यार चलो करो, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा पैसे फेंकेंगे, पैसों के ऊपर वो लोग पेशाब कर देते हैं ना, जब करने पे आते हैं तो ये भी करते हैं, जैसे कि उन्होंने उसको कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरब ने, हाँ उसने कहा फेंक दो पैसा पानी में, गुसल खाने में, ठीक है ना, फेंक दिया उसने, $1 बिलियन ऐसे ही फेंक दिया, 650 एक को दिया, 400 एक को दिया, उसने कहा बहुत पैसा हमारे पास।
अल्लाह ताला पूछेगा क्या मुझे पसंद है, हमने पेशाब किया। फरिश्ते बोलेंगे पेशाब तुमने पैसों के साथ क्या किया? दूसरे बोलेगा यार वो तो सारा टॉयलेट में चला गया था। अच्छा अच्छा तुम ही थे जिसने पेशाब किया था, इसको जरा साइड पे जाने का पीछे, ठीक है ना। तो वहां पर एक गाड़ी आएगी, वीको आएगी, जैसे पाकिस्तान में आती है, ठीक है, इधर लेके जाएंगे उसको, तो उसकी वीको भी अलग होगी, आग की बनी हुई होगी, ठीक है, ठीक है, ऐसे मारेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा बड़ा मसला है पाकिस्तान में ना। जब पाकिस्तान में आता है, मेरे ऑफिस के बाहर रोजाना वीको खड़ी होती थी। ठीक है, तो बोलते थे, भाई आप के लिए, मैं बोलता यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, देखो हमारे सामने जाऊंगा नमाज पढ़ने, ठीक है। एनीवे द पॉइंट इज के दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गो हेयर एंड देन गो फ्रॉम देयर, ठीक है ना। पाकिस्तान से जाना मुश्किल हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं ना, डोंट गेट डिसहार्टेड कि यार कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, नहीं। हालात चेंज हो सकते हैं, हो सकता है लोग खड़े हो जाएं, ठीक है। हो सकता है कि लोग बोलें कि यार नहीं गलत है ये, हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाएं, ठीक है ना। तो ये सब चीज, इट टेक टाइम। हाँ इट विल टेक टाइम। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो चीज पहले खराब हो जाए ना, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स के लिए रहना बेकार है। मूव फ्रॉम हियर ओवर देयर। या किसी ने कहा रिमोट जॉब्स में तुम 1500 $2000 कमा सकते हो, $3000 तक तुम घर बैठे बैठे डेवऑप्स सेसऑप्स में कमा सकते हो। इफ यू कैन डू दैट, दैट इज मच बेटर फॉर यू, देन यू कैन शो योर बैंक स्टेटमेंट, यू कैन डू दैट, ठीक है। और डेवऑप्स सेसऑप्स पढ़ लिया, तुम्हें रिमोट जॉब $3000 $4000 की मिल सकती है पाकिस्तान में। कोई तुमसे बोले ना $10,000 कमा लोगे, तुम्हें बहुत एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। तुम्हें डेवऑप्स सेसऑप्स एआई पढ़ लो, बोलो मुझे एआई का काम भी आता है, ऑटोमेशन आती है, सब कुछ आता है, देन यस, ठीक है ना। किसी ने कहा कैट की जॉब्स का, तो कैट की जो जॉब्स हैं वो सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, कंप्लाइंस की जॉब्स हैं, तुम उसमें घुस सकते हो, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन $1000 तक मिलता है, $1000 तक रिमोट तुम कमा सकते हो, $1500 तक कमा सकते हो। यानी कि वही होगा कि तुम लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाओगे। लेकिन डेवऑप्स सिसऑप्स में पैसे ज्यादा हैं, क्योंकि वो डेवऑप्स सिसऑप्स यही काम इंडस्ट्री के सारा उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन डेवऑप्स सिसऑप्स के पिलर में ना, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, तो वैसे भाई ये डिफरेंस है। इसमें जो रिमोट जॉब है, वो मैंने एक बात नोट की है, वो ज्यादातर रिमोट जॉब उसी जिस कंट्री में होती है वो उसी कंट्री के लोगों को ज्यादा प्रेफर करता है रिमोट जॉब में, बजाय कि वो कि एशिया पैसिफिक में आए, क्योंकि उनको एक इशू जहां तक मुझे लगता है एक होता है कि वो एक ट्रस्ट नहीं कर पाते एक बंदे पे कि हम किस तरह लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करूँ, तो उनका सारा कंट्रोल एक्सेस सिस्टम का, सर्वर्स का, वो एक बंदे को दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कंपनी है, बेशक यूरोप की है। तो हाउ दे कैन ट्रस्ट कि मिल वो हम जाती है, जिस बंदे को। मिल जाती है। होता ये कि ना तुम डायरेक्टली, होता है कि उनके या तो ऑपरेशंस उनके दुबई में होते हैं, कहीं और होते हैं, पहले वो तुम्हें थोड़ा सा काम देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे जाते हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग कि क्या है, क्योंकि रिमोट जॉब्स बहुत बढ़ गई हैं, टैलेंट की शॉर्टेज है बहुत ज्यादा मार्केट में, ठीक है। अगर तुम लोगों ने लेवल 3 डिप्लोमा के साथ डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई और बिग डेटा और ये पढ़ लिया, जो है ना साइबर डिफेंस या ऑफेंसिव पढ़ लिया, ये 5 चीजें पढ़ ली, ये तो तुम उसको कहते हैं स्मार्ट ऑप्स। स्मार्ट ऑप्स एक बड़ी बला है जो अभी मार्केट में उतर रही है, ठीक है ना। वो खड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ना, दूर से नजर आ रहा है कि धुआं धुआं जमा हो रहा है, राइट। तो पता चल रहा है कि वो आ रही है, तो ये है। लेकिन वही है ना कि जब वो इंडस्ट्री में कोई चीज आती है ना, तो समंदर खुलता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने समंदर खोला, फिरौन की फौज दूर से आ रही थी, वो अंदर आई, समंदर बंद हो गया, खत्म, ठीक है ना। तो वो चीज खड़ी होती है, लेकिन वो 10 साल के बाद ना समंदर तक जब पहुंचती है, 10-15 साल 20 साल के बाद ना, उसके बाद समंदर उसको पी जाता है, क्योंकि वो समंदर क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, समझ, वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स है ना। तो वो फिर उसको जो है ना वो चीज आती रहती है। तो अभी इस साल की अगले 20-25 साल तक एआई जो है ना हर चीज में घुसेगी, डेवऑप्स में घुसेगी, सिसऑप्स में घुसेगी, लेकिन वो उसका काम क्या है कि वो भी लर्न कर रही है, अभी उसको ऑटोमेशन पे कर रही है, सब कुछ कर रही है। मगर एआई इस लेवल की नहीं है, और वो कभी भी इस लेवल की अभी फिलहाल अगले 20-25 साल में नहीं हो सकती कि वो चीजों को खुद मैनेज करे, क्योंकि उसका उसका जो है ना एक एक टाइम लिमिट होती है जिसमें वो नॉलेज को लर्न करती, सब कुछ करती है। उसको आप खोल भी दो तो भी वो ऐसा नहीं है कि खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर दे। ह्यूमंस में और उसमें ये फर्क है। चाहे इलान मस्क कुछ भी कहे, दूसरे लोग कुछ भी कहें, जिसने ये बनाई वो कुछ भी कहे, वो उनकी अपनी वो है। ये सब लोगों के अपने अपने बिजनेस स्टेक्स हैं, वो उसके हिसाब से बात करते हैं। मैं तुम्हें इस्लामिकली और उसकी इखलास के साथ बात करूंगा कि क्या है, ठीक है, कि उसमें क्या चीजें हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन द रेस्ट इज ऑल बेसिकली, इट्स ऑल जस्ट बिजनेस। वो हु इज एरिक कार्टमैन? एरिक कार्टमैन कौन है भाई? हु वॉचेस साउथ पार्क अ लॉट? कौन है भाई एरिक कार्टमैन? हु इज एरिक कार्टमैन? आ जाओ भाई, तुम सामने हो। Who is- फैसल भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरा बस। जी बोलिए बोलिए।
वो आपने शुरू में हसन भाई का नंबर दिया था, तो मैंने कहा आपसे मैं पूछूँ, क्या मैं उनसे थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ रिगार्डिंग थोड़ी सी हेल्प या असिस्टेंस मुझे चाहिए हो? तुम्हारे नंबर आ गया ना, जो गो एंड टॉक टू हिम, फाइन। ओके, थैंक यू सो मच। Eric Casterman, Cartman, yes, go ahead. Where are you from, Eric? I'm asking you a question, Eric. Can you come forward and talk to me, or you're just going to type here? Oklahoma. Do you have a working mic? Yes, Eric. Okay, if the mic is working, it's fine. Okay. Anyway, I can't unmute. I tried to unmute you. There you go. Try again. Go ahead, talk, Eric. If you have any questions, I can answer those questions. Okay, anyway, that's fine. Okay, Noshaba Jamil, go ahead. What question do you have? Ali Khan, PwC, कहाँ हो भाई तुम? Where are you? Ali Khan from PwC. It's been a long. कैसे आप? ठीक ठाक है? तुम तो ऐसे गायब हुए यार कि तुम्हारी PwC निकाल दो ने मार दिया 10 घंटे काम कराते, कभी यूटिलिटीज, कभी रेलवे, कभी विंड पावर प्लांट, कभी माइनिंग इंडस्ट्री, कभी सीआरएमपी, कभी इंसिडेंट रिस्पांस। बस इन चीजों में जिंदगी गुजर रही है आजकल। अच्छा, तुम ऐसे गायब हुए, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। मैं गायब नहीं हुआ, बस काम में बिजी था। ये 2-3 सर्टिफिकेशन निकाल रहा हूँ, जीएसपी का, और ये जो जीसिप है, जी रेड, ये 3 सर्टिफिकेशन निकालने हैं। फिर उसके बाद मैंने ये IC 62443 के सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, इसके भी सर्टिफिकेशन निकाले। तो बस इसमें बिजी हूँ, काम होता है, बस काम होता है और कुछ नहीं। आप बताएं कैसे? ठीक ठाक है? मैं नाफी का पुराना स्टूडेंट हूँ, अगर किसी को बताना हो अपने इंट्रोडक्शन में। मैंने कैट लिया था शुरू में, साइबर सिक्योरिटी, वहां से पहली एक जॉब मिली थी, फिर उसके बाद दूसरी जॉब मिली थी PwC में। नहीं, तो तुम अभी कहाँ पर हो? अभी यहीं पर हो? शादी वादी कर ली? क्या हुआ उसका? बस चल रही है, वो शादी की स्टोरी चल रही है। वो एक होने वाला था, लेकिन वो उन्होंने मांगी कि 100 तोले सोना देना है। हमने कहा यार बहुत ज्यादा मांग रहे हो। ये वो बाद में बताऊंगा, पेशावर में पॉलिटिकल फैमिली थी, उनकी फैमिली थी, कह रहे 100 तोले सोना और इस्लामाबाद में घर, और मैं कहा यार ये तो बहुत ज्यादा मेहर मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखो। तुम बेवकूफ आदमी हो ना, तुमको मैंने कहा भाई तुम मदरसे जाओ, देखो वहां पर तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां मिल जाएंगी। तुम पता नहीं कहाँ तुम जहां देखो कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई, अगर तुमने कर ली। फैमिली देख रही, हमारी फैमिली को दिया हुआ है वो ऑप्शन, तो फैमिली को दिया हुआ है कि फैमिली देख रही है। इधर तो खैर मुझे नहीं मिल रही इतनी कुछ खास। इधर सिस्टम थोड़ा अजीब सा, क्योंकि इधर जो ज्यादातर लोग इधर उधर हो गए, पश्तूनों में भी ज्यादातर लोग इधर उधर है। उनको इस्लाम की बात कर, उनको लगता है मैं बहुत सख्त हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हूँ। के तुम इधर उधर किताबें पढ़ना छोड़ दो, तुम जाओ अपनी चीजें पढ़ो भाई, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द की थिंग्स, ठीक है ना? तो बिल्कुल। बट एनीवे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी हुई बात करके तुम्हें। मैं खुशहाल और ना मुस्तफा तुम्हारे पास आएंगे बात करने के लिए। मैं तुम्हारा नाम ठीक है, भेज दीजिए। किसी को गाइडेंस देनी है, किसी कुछ देना है तो। हाँ, आजकल तो मैं ये जो आई थिंक सो क्लाइंट का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ, उनके OT सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसके उनके लिए वो पोजीशन पेपर्स बना रहा हूँ। उसके अलावा एक ये ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है कनाडा की, उसके लिए इंसिडेंट रिस्पांस और CRMP फ्रेमवर्क बना रहा हूँ। उसके अलावा भी इंसिडेंट रिस्पांस पे टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की एक माइनिंग इंडस्ट्री के साथ। तो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, तो काफी अच्छा एक्सपोजर मिला है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू। तो आई जस्ट वांट टू से सलाम, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, तो मैं इसलिए आया था। All praises belongs to Allah from whom good things are accomplished, right? It's not me. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी आप लोगों को गाइड कीजिए, बस मैं सलाम करने आया था। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं इंशाल्लाह बात करूंगा तुमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। So he's one of our students who secured a job, mashallah, and then started working at PwC, and now I think he's very busy, mashallah. So I will talk to him. I'll try to bring him. Ahmed Ali Khan
as one of the faculty members, inshallah, possibly, inshallah. I'm looking into that, Ahmed Ali Khan. So I will talk to you. Yes, Eric Cartman, go ahead. I think you're allowed to talk. You started saying something and then immediately you were unmute, someone muted you. Go ahead. Okay, next is Noshaba. Go ahead, Noshaba. Noshaba, बोलिए. एहसन जी बोलिए एहसन. एहसन की आवाज नहीं आ रही. अरसलान साकिब, यस गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा ये था कि मुझे थोड़ी सी करियर गाइडलाइंस चाहिए. मैंने आज से 3 साल पहले मैट्रिक किया था और उसके बाद मैं आईटी की फील्ड से रिलेटेड हूँ और ख़ास मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में है. और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एक कंपनी बिल्ड करूँ जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक पेन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स और अदर टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी सर्विसेज आती हैं इसमें. तो मैं यहाँ पे अलनाफे में हूँ, CSST का स्टूडेंट हूँ और मुझे थोड़ी सी करियर गाइडलाइंस चाहिए. डोंट एस्टैब्लिश एनी पेन टेस्टिंग कंपनीज. उसका कोई फायदा नहीं है. पेन टेस्टिंग सारी जो है वो कंपनीज के लेवल पे काम नहीं आती क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो डिफरेंट हो गया. इट्स वेरी डिफरेंट नाउ. इफ यू वांट टू डू समथिंग, open a cloud company, a cloud security architect company. That's much more profitable for you. You can make a lot of money through that in terms of providing consultancy and whatnot, but not through the other way around, right? There's a lot of things. ये गाइडेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, बड़ा लोडेड क्वेश्चन है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. बट डू सम मार्केट सर्वे एंड कैम बैक एंड सी कि क्या हो सकता है ना उसका. देन यू विल नो. अरसलान, ठीक है, अरसलान नाम है ना तुम्हारा, राइट? एहसन साहब बोलिए. नौशाबा जमील बोलिए. सर मेरा ये क्वेश्चन था सर. मैं कैट का स्टूडेंट हूँ और सर मैं स्टक हुआ हूँ सर. ये CSSP की जो है सर क्लासेस मैं ले रहा हूँ और लिनक्स मैंने आपका जो कोर्स आपने करवाया है जो स्टार्ट में सर वो किया है और अभी जो RHEL है सर काजिम का वो कर रहा हूँ. उसमें तकरीबन फर्स्ट उसका जो है हाफ वो हो गया है. तो सर जो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन ये हो रही है, कोर्स काफी ज्यादा है तो मुझे ये समझ नहीं चल रही कि मैं पहले क्या स्टार्ट करूं और कैसे. मतलब अभी मैं तकरीबन 4 से माह से ज्यादा हो गए हैं सर उसमें. आप भी मेरा नंबर ले लें. टेक माय नंबर, ठीक है, and then reach out to me. I'm going to move you to basically the uni course bundle, right? Ehsan, नाम है ना जी आपका? सर. आपका नंबर नहीं मुझे नजर आ रहा. कहाँ पे है? मैं नंबर आपको चैट में भेज रहा हूँ. So just take my number, ठीक है ना, and then send me basically all the information कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए. I will tell you then कि तुम्हें किस तरह से कहाँ शुरू करना चाहिए, ठीक है ना. ओके सर. ये आपका नंबर शो हो गया सर. जी, ठीक है. So take that inshallah and then talk to me. Then I will let you know inshallah what needs to be done. Okay? ओके सर. चलें. Noshaba Jamil, you can still talk. I'm trying to unmute you, but I can't hear you. Eric Cartman, yes, go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी बहन बोलिए. सर मैंने 22 नवंबर को वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक का एनुअल कोर्स लिया था. उसके बाद सर पोर्टल चेंज होने में और लैब्स बंद हो गई थी. उसके बाद जब लैब्स ओपन हुई तो मैंने सिर्फ एक लैब की थी. उसके बाद से सर मुझे लैब्स नहीं दी गई अभी तक. मैंने सबसे बात की है तो अभी तक मेरी लैब्स ओपन नहीं हो रही. कल एक सर से बात हुई थी, उन्होंने जाके मेरे एनिडिक्स करके मेरे लैपटॉप में आके देखा था सर. उसमें उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट एथेंटिकेशन का मसला आ रहा है.
तो सर अभी तक मेरा मसला हल नहीं हुआ, अभी मुझे इतने मंथ हो गए लेकिन मैंने अभी तक एक लैब भी नहीं की। कुछ मुझे यूजर्स इशू आ हैं रहा है। जिनको लैब ऑथेंटिकेशन का मसला है, 7-8-10 यूजर्स हैं जिनका हमारे सामने नाम आया है, ठीक है, और यस मेरे सर, पास 11वीं यूजर है जिसको ये मसला हुआ है। आई विल यस सर, पर्सनली असिस्ट दिस थिंग। आप जो है ना नंबर लेने में, टेक माय नंबर इंशाल्लाह, यस सर, नंबर ले यस लीजिए, सर। आप मुझे मैसेज करेंगी। यहाँ अगर एहसन अली यहाँ बैठा है भाई, एहसन अली है यहाँ पर, एहसन मेरा अली नहीं है शायद, अगर वो होता तो मैं आपको, सर एहसन बोलिए बोलिए। सर एहसन से ही मेरी शुरू से बात हुई है। जब से मैंने वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक लिए, उन्होंने ही यहाँ के सारा कुछ देखा था और उन्होंने ही मेरा केस रेफर किया था, लेकिन उनको भी बताए हुए मुझे 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया ये केस उनके पास है सर। ओके, मैं ये आपका ना खुद केस डील करता हूँ, आप मेरा अपना लिख लें, ठीक है ना, ताकि मुझे एक यस ETA सर, मिल जाए, सो दैट आई कैन हैव एन ETA ऑन बाय व्हाट टाइम योर इशू विल बी रिजॉल्व इंशाल्लाह। ठीक, यस सर, दिस इज माय यस नंबर, सर, यू कैन टेक माय नंबर इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैसेज मी राइट नाउ दैट यस सर। आपने इस दिन इस तारीख को मेरे साथ बात की थी, ताकि मैं फिर उसको आगे जाकर उसको कंप्लीट कर सकूँ। ठीक, ओके। Eric, I'm going to try one last time. What is the question you have? What is the question do you have? I mean, you can ask the question over here. So then I will be able to answer them, right? What is your specific question? You can message me directly if you don't want to message here, okay? Anyway, inshallah, next is, who is next? Luqman? Luqman, yes, go ahead, Luqman. अस्सलामुअलैकुम सर। Alaikum salam wa rahmatullah ji. सर मैं कैट के ओल्ड स्टूडेंट हूँ, दिसंबर 2021 का। अभी मैं आजकल मूव हो चुका हूँ सऊदी अरबिया लास्ट 2 महीने से। तो डिप्लोमा किया मैकेनिकल में और कैट आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जॉब ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई एडवाइस हो मुझे। और मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करनी चाहिए विद मतलब सऊदी अरब के मार्केट के हिसाब से या नहीं? आपको सऊदी के हिसाब से पहले तो अपना CV बनवाना चाहिए, ठीक है ना, और फिर आप सऊदी अरेबिया में आप जहां पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई देयर एंड देन, राइट। तो आप भी जब इंटर्नशिप खुल रही है ना, गो इन देयर, स्टार्ट डूइंग द इंटर्नशिप, बिल्ड अप योर, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बहुत जॉब्स हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा जॉब्स जो हैं आपको, यानी कि क्लाउड 3 तो हमने लेवल 3 पढ़ लिया, ठीक है ना, लेवल 3 के जो इलास्टिक सर्च के कोर्सेज हैं वो सारे करने के बाद देन गो इन एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। यू कैन इजीली सिक्योर अ गुड जॉब इन सऊदी अरेबिया, जहां पर तुम बैठे हो ना अभी, तो तुम कर सकोगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम इसके लिए पूरी प्लानिंग करके जाओ, उस पर करो। Who is essex.ac.uk? Who's from Essex? MT22932 @essex.ac.uk. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं आप मरियम किसी हूँ, में पढ़ रही हैं? एसेक्स से मास्टर्स इन अप्लाइड डाटा साइंस कर रही हूँ। सर मैंने अभी एडमिशन लिया है इधर आपके भी कोर्स में, डेवऑप्स, सॉफ्ट एंड एआई एडवांसमेंट ट्रैक में। अच्छा, ठीक है, शुरू कर लिया आपने, गुड, जी जी सर, मैंने कर लिया। गुड, अच्छा, तो ठीक है। उसमें सर अभी मैंने स्टार्ट किया है पाइथन प्राइमर से, बट उसमें मुझे कुछ इशू आ रहा था कि कुछ वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, तो वो मैंने टीम से कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि आपका इशू रिजॉल्व हो के आपको आपने बताएंगे। आपके पास कस्टमर डिलाइट मैनेजर आएगा, आपके पास ना कस्टमर सपोर्ट खत्म हो रही है, ठीक है ना। जी 1 जून से या 5 जून से आपके पास ना आपका एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होगा। सो यू विल हैव अ डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, ओके जिसमें आप बैठ के उनसे सारे सवालात कर सकती हैं, जो भी आपको मसला हो, बस आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, उसका एक व्हाट्सएप का नंबर भी होगा, उसी ऑफिस का नंबर भी जाएगा आपको, उसके ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके जो भी सवाल करना आपसे पूछेंगी, एंड देन दैट पर्सन विल बी एबल टू असिस्ट यू देयर एंड देन, राइट। ठीक है। तो ये सर आप हमें खुद ब खुद कांटेक्ट कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा? जी जी, आई मीन दे विल स्टार्ट डूइंग दैट, सो दे विल ओके। डू दैट। हाँ, वो आपको सब बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग दैट इंशाल्लाह। तो सर ये वीडियोस क्यों नहीं अवेलेबल आपको? आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ है, आपको यूनिक कोर्स नजर आया, क्या कोर्स नजर आया आपको, एक ही बंडल मिला, क्या मिला आपको? सर मुझे मुख्तलिफ, अभी मैंने मंथली लिया है,
ठीक है, तो मंथली लिया है तो उसमें फिर मुख्तलिफ कोर्सेज आए हैं, पाइथन प्राइमर और वो सारे कुछ। नहीं, तो आपको भी यूनिक कोर्स में लाना चाहिए था। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है बहन? जी है। आप मुझे मैसेज करें ताकि फिर मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करूं ना इसके ऊपर। आप ओके और सर। रजीज को, एआई ऑप्स में बहुत सारे लोग आए हैं तो उनको मैं एक जगह ला के जमा करके ना एक साथ बात करूंगा उनके साथ। ठीक है, कि ओके। उनको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि वही आप ना सर, मैं यही कह रही थी, अगर मुझे प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए ना, मैं कैसे स्टार्ट एब्सोल्युटली करूँ, कहाँ एब्सोल्युटली। से। देखिए, अब जो भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ना, तो उनके साथ मेरे साथ वन ऑन वन मेरे ओके। सेशंस, ठीक है, वन ऑन वन मेरे साथ सेशंस हैं। तो आपका मेरा वन ऑन वन मेरे साथ सेशन होगा। वहाँ आपका ठीक है कस्टमर सर। सक्सेस मैनेजर बैठा हुआ होगा और वो देख रहा होगा कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और फिर वो सारे नोट्स लेगा, आप भी नोट्स लेंगे, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है सर। ठीक सर है मैंने ना? आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। आपका यूके का नंबर नहीं है इसका? हाँ, सर यूके का है। सॉरी सॉरी, मरियम, हाँ ठीक है, मरियम यूके डेटा साइंस। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर। सबसे जो पहला काम करना है ना आपको, जो सबसे पहले काम करना है, अभी जी सर। जाके ना जब शुरू करें, आपने अ, अपने आप को पूरा तैयार, आगे एक तो आप अपना सीवी मुझे भेज दें, आई वुड लाइक टू सी योर रेज्यूमे। ठीक है ओके। ना? सही है। दूसरा काम ये करना है आपको, अब लेवल 6 में है तो लेवल 6 में आपको डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई तीनों चीजें मिलेंगी। यू मस्ट इंश्योर कि आप ना कितना टाइम लगा रही है रोजाना पढ़ने के लिए। सर अभी मेरा कल ही ये सारा कुछ क्लियर हुआ है, तो आज स्टार्ट किया था, तो बट वो वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए फिर अभी नहीं प्रॉपर आप मैंने, जो है ना, बट नहीं, मैंने कितने 3 आवर्स लगाने डे कितने के। घंटे पढ़ सकेंगे आप? जी सर। कितने घंटे पढ़ सकेंगे आप? सर 3 आवर्स में पढ़ सकती हूँ, 1 डे में। ठीक है, तो आप जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। और 3 आवर्स पढ़ सकती हैं, और वीकेंड्स में कितना टाइम लगा सकती हैं? वीकेंड्स पे ज़्यादा हो सकता है, 5 तक हो सकता है। तो 3 वीकडेज में लगा रही है, 15 घंटे ये हो गए, 5 आवर्स वहां लगा दिए, 10 आवर्स ये हो गए, तो 25 आवर्स आप लगा रही है ना। जी आपने पूरी, और आपकी डिग्री कब खत्म हो रही है? सर, जनवरी में। बहन, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने अगले 6 मंथ्स में, 6 to 7 मंथ्स में तमाम चीजें खत्म कर देनी है आपने। ओके ठीक है, सर। जब तक थैंक आप यू। वहाँ पहुंचे ना, एक तो जी आप जी। डिसर्टेशन का टॉपिक है वो भी यहीं से करें, निकालें आप। ठीक है, आपकी सारी चीजें कंप्लीट ताकि हो जाएं। और दूसरा, जब आप ये लेके जाएं तो आप ना, यानी कि द मोमेंट आप पीएसडब्ल्यू पकड़े, आपकी जॉब आपके उससे पहले आपके हाथ में। ओके सर। ठीक है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपने पूरा जोर लगाना है। ठीक है ना? मेरे पास बहुत सारे पीएसडब्ल्यू के बच्चे आए हैं जिनकी जॉब्स नहीं हुई है, यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के वो घूम रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक आपके है पास सर। टाइम है अभी कि मतलब कि उनकी तरह मत टाइम जाया करना, अपना टाइम आपने प्रॉपरली लगाना है। ठीक ठीक है, है सर। जैसे मैं इंशाल्लाह। आपको कहूंगा, तो आपने अभी, आज क्या है, सैटरडे है ना, संडे मंडे संडे, जी। कल संडे, अगर आपके पास लिनक्स का पूरा एक्सेस है, लिनक्स का आपको लेवल ओके। 1 नजर आ रही है जो भी है, तो आप जो है ना फौरन से अपने आप को जो है ना उसको पूरा खत्म कर दें। ठीक है सर। लेवल 1 आप जाके खत्म करें। ठीक है ना, बिल्कुल जाके कंप्लीट करें उसका। ठीक है, ठीक है, लिनक्स का स्टार्ट करूँ? लिनक्स से स्टार्ट करें, या आप जो है ना डॉकर से स्टार्ट करें, अगर आपको डॉकर नजर आता है डॉकर से स्टार्ट ठीक करें, है। ओके। ओके सर। स्टार्ट कर लें। सही है। पाइथन ऑटोमेशन अगर आपको नजर आता है, आप पाइथन ऑटोमेशन से शुरू कर लें। जी जी, वो भी है। ये बैश अगर आपको शुरू आता है तो बैश भी कर लें। तो आप कम से कम, जब मेरे पास आप मंडे को या ट्यूसडे को जब मैं आपसे बात करूँ ना, हम्म। बोले कि मैं बैश और पाइथन ऑटोमेशन खत्म कर चुके हूँ, ओके सर। या इंशाल्लाह। मैंने इतना इतना कर लिया, मुझे समझ भी आ ठीक गया, है। मैंने कर लिया। ठीक है ना? ठीक तो है आपने सर। पूरा इंशाल्लाह। पूरा जोर लगा के जल्दी नहीं निकलना है। ठीक है ना? ठीक है, जब मैं आपको आप बताऊंगी। बैठेंगी, मेरी बातचीत होगी, तो आपने शुरू करके उसको खत्म करना। ओके ठीक, सर। इंशाल्लाह। ठीक है ना, इंशाल्लाह। ताकि, और आपने सीवी मुझे भिजवा देना है कि ये मेरा वर्ड में सीवी, ताकि मैं उसको बनाना शुरू कर दूं, ताकि ओके। बाय द टाइम आप जाएं तो यूर फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है ठीक, सर। इंशाल्लाह। ठीक है ना? चलें। ठीक है। ओके। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। नमाज 1:30 बजे हो गई थी, 4 बजने वाले हैं। आई हैव टू प्रे सला, बिकॉज पे टाइम निकल जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लाइव क्लासेस में मैं बैठूंगा। मेरी जो लाइव क्लासेस जो दूसरी हैं वो पोर्टल के अंदर ही होंगी, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होंगी। दैट इज़ फॉर, हो सकता है पहले 1-2 क्लासेस ब्रॉडकास्ट हों, उस पर हम बात करेंगे। बट एनीवे, इंशाल्लाह फिर मैं बात करूंगा। अशर, हु इज अशर? अशर कौन है भाई? ये फिनलैंड वाला अशर है? कौन है? कौन सा अशर है भाई? विच अशर इज दिस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं समझा अशर फिनलैंड वाला बंदा है। अच्छा जी, बहन बोलिए। सर वो मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं इसके डेवऑप्स के ना, तो अब इंटर्नशिप के लिए क्या अप्लाई कर सकती हूँ मैं अभी?
सब लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग इंटर्नशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डेवऑप्स में हैं तो आप डेवऑप्स की टीम में काम करेंगी, अगर आपने सिसऑप्स में, आप सिसऑप्स की टीम में काम करेंगी, अगर आपने 2 साथ लिए हुए हैं तो आप दोनों की टीम्स में काम करेंगी, क्योंकि हर टीम को अलग अलग काम दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लेवल 3 में, अगर आपने डेवऑप्स लिया हुआ है और डेवऑप्स में आपको लेवल 3 के कोर्सेज भी मिले हैं ना सारे, राइट, जी जी वो सारे भी आप उसकी, तो आप वहां से शुरू करेंगी, प्रोजेक्ट वहां मिलेगा, फिर अलग बंदा अलग अलग काम कर रहा होगा। तो उस प्रोजेक्ट के 8 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उसमें बताया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरे हिस्से में डेवऑप्स में फिर आप डेवऑप्स वाला काम करेंगी, दूसरे वाले बच्चे डेवऑप्स वाला काम नहीं देख सकते क्योंकि वहां बैठे हुए नहीं है ना। अगर आप डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़नी है तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेप देखेंगे, ठीक है ना। तो सब आपको नजर आएगा, सब आप देख सकेंगे। मैं यहाँ पर कुछ सवाल कर रहा है, किसी ने सवाल किया है लेवल 6 के ऊपर। जी ताहा साहब, जो हमारा जो डिप्लोमा है, कहाँ है, वेयर इज ताहा हियर? जी ताहा बोलिए, क्या सवाल है आपका? क्वेश्चन इज योर लेवल 6 ट्रैक डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री? इट इज अ डिप्लोमा, इट इज इक्वलेंट टू बैचलर्स डिग्री इन यूके, ठीक है ना, एंड इन यूरोप एंड इन यूएसए एज वेल, ठीक है ताहा। It is being accredited right now. It is going through the accreditation process. It may take few weeks, ठीक है ना, because हम खुद इतने सारे कामों में लगे हुए थे। आज साके का काम हमारे हो गया है, so now we will inshallah get it done, ठीक है। So expect that to be done in the next 3 to 4 weeks time. Level 5 and level 6 की और level 7 की qualifications जो है ना वो आपको नजर आएंगी, but you can start learning it right now. As soon as it is accredited, then you can go for the exams as well, and you can do all of those things as well, inshallah. Okay, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सिट फॉर द लाइव सेशंस एंड आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह फॉर Q&A एज वेल। तो जिसके जो भी सवाल हैं वो कर सकेंगे। मैंने पूरा का पूरा जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है पूरा रीडिज़ाइन किया, पूरा उसको वो किया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमारी मदद करें, वी आर इन अ वेरी डीप पिट राइट नाउ। सो मैंने कहा ओके इंशाल्लाह ठीक है। सो दैट थिंग इज कमिंग, होपफुली बाय कमिंग week I will let you know and announce all the terms and conditions and everything inshallah, which will make things very very clear for all of you, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम